Krishna. अमरीश है हमारे पास सभी लोग हैं Shri Gauranga ki jai, Prabhupada ki jai, Govinda Swami Shri Gurudev ki jai, Ved Bhakta Vrinda ki jai. You can put that fan on and this one a little bit. It's connected. Little bit. I just want everything to be as peaceful as possible externally. मैं चाहता हूँ बाहर से कम जितना ज़्यादा शांत में हम माहौल बना सकें सब लोग And that part is reasonably solved. कम से कम वो भाग Then we have to go on the inside. तब हम भीतर की तरफ And there's a whole nother storm going on inside. और अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा है Outside looks cool. Inside a big storm. अंदर से पूरा तूफान Namo Vishnu Padaya Krishna Katha Srimate Swami
Hare
Is it warm in here? अंदर जाके बढ़ गई Doesn't it feel warm? You can open some windows. ज़्यादा लगती है तो हम कुछ खिड़कियाँ खोल सकते हैं All windows open. It's all open? सारी खिड़कियाँ खुली Are you sure? आप निश्चित हैं Maybe it's old age or something, I don't know. हो सकता है बुढ़ापा आ रहा है Hare Krishna. Do you want to continue our podcast? आप चाहते हैं अपना पॉडकास्ट करना जारी रखें Vedic culture and historical presentation of Vaishnav mercy in the Western world. तो वैदिक संस्कृति और कैसे ऐतिहासिक वैष्णवों की कृपा सारे पश्चिमी जगत में So we were reading Srila Prabhupada one lecture he was giving in London in August 1971. तो हम एक प्रवचन से पढ़ते थे जो प्रभुपाद ने लंदन में दिया था अगस्त 1971 Om Jnana Timaranta Shravananjana Shlakaya Chakshunatana Tasmai Shri Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaurabhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So Srila Prabhupada was talking about the Mahabharata or the Greater Bharata, Bharata Bhasha. तो श्री प्रभुपाद महाभारत के बारे में बात कर रहे थे महान भारत And how the whole world was under this Vedic culture by the Rajashis controlling and being responsible for the world. और कैसे संपूर्ण भारतवर्ष पे पृथ्वी पे राजर्षियों का राजा था और पूरे विश्व को नियंत्रण में शासन में चलाता था. And then as the yugas were going and getting more and more degraded, then there was more and more contamination, more and more less qualification, and then gradually it started to deteriorate over time as the different ages were progressing towards the yuga. और जैसे युग आगे बढ़ता गया और कलयुग नजदीक आता गया वैसे धीरे लोगों के अंदर योग्यता पतन होने लगा शासन करने की शक्ति भी कम होने लगी योग्यताएं. So Srila Prabhupada said so there was a great war long ago because Kshatriya kings they were not ruling nicely. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत समय पूर्व एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ क्योंकि क्षत्रिय राजा सही तरीके से शासन नहीं कर रहे. Before that, the Kshatriya kings or the administrative Rajashi means they're pure devotees, but also Kshatriyas. और पूर्व में क्षत्रिय राजर्षि हुआ करते थे तो उनके अंदर साधु जैसे लोग नहीं करते थे. And of course, they're getting direct instruction and guidance from Brahmin Vaishnavas. और अवश्य वो सीधा मार्गदर्शन और उपदेश प्राप्त करते थे ब्राह्मणों से. So everything and everyone was like a Ram Raj. Everything was like a perfectly spiritually being administrated. तो सब कुछ पूर्ण तरीके से राम राज्य की तरह सही व्यवस्था से चल रहा था. But gradually, as everything was breaking down, as it was becoming more and more towards Kali Yuga, the Kshatriya kings, then they were not also ruling very nicely. और जैसे धीरे चीजों का पतन होने लगा कलयुग नजदीक आने लगा क्षत्रिय राजा सही तरीके से शासन नहीं कर रहे. Nature of this world, this Maya, is everything deteriorates over time. और ये भौतिक जगत माया जगत का स्वभाव है समय के साथ सारी चीजों का क्षरण हो जाता है. So at that time, Parashurami wanted to kill all of the Kshatriyas. तो समय आया जब परशुराम सारे क्षत्रियों को मार डालना चाहते थे. And then we understand, Prabhupada says from Mahabharata, that in history we can understand that many Kshatriyas, they all left that part of the country. और श्री प्रभुपाद बताते हैं महाभारत के इतिहास से हम जानते हैं कि बहुत सारे क्षत्रिय इस देश को छोड़कर वो बाहर भाग So गए. they left India, the homeland, the mainland. तो वो भारत छोड़कर जो मातृभूमि मुख्य भूमि को छोड़कर वो बाहर चले Then गए. they started migrating out to other parts of the Western world and also into America. But they were also, because they're coming from India, Vedic culture, they're considered Indo-Aryan stock. तो धीरे ये लोग पश्चिमी देशों की तरफ आगे बढ़ने लगे और धीरे अमेरिका की तरफ भी आगे बढ़ने लगे क्योंकि ये भारतवर्ष से आए थे वैदिक संस्कृति से इसलिए इनको भारतीय आर्य कहा जाता है.
So Srila Prabhupada, so these European Americans, they are also formerly previous life, they were Kshatriyas. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि यूरोपीय और भारतीय लोग भी अमेरिकी लोग पहले क्षत्रिय थे And from the Mahabharata history, we can understand that. और महाभारत के इतिहास से हम इसे समझ सकते हैं But somehow or other, they have lost their Vedic culture लेकिन किसी तरह से इन्होंने अपनी वैदिक संस्कृति को खो दिया है by long separation from the mainland. काफी लंबे समय से ये मुख्य भूमि से अलग रहने की वजह से So when you're in the mainland, means you're doing sadhu sangha, satsanga, you're hearing about Krishna, Hari Katha, Krishna Katha. तो अगर आप मुख्य भूमि में हैं इसका मतलब आप सत्संग साधु संग कर रहे हैं हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण कर रहे I हैं said that's why also you should go to the holy places, is to do sadhu sangha, satsanga, and then hear Hari Katha, Krishna Nam. और इसलिए कहते हैं कि हमें भगवान के पवित्र धामों में जाना चाहिए वहाँ सत्संग का साधु संग करने के लिए हरि कथा This कृष्ण is the way to keep our purified, our consciousness in purified state, और यही तरीका है हमारी चेतना को शुद्ध स्तर में बनाए रखने का so that we can remember that we are eternal servants of Krishna. ताकि हमारे मन में हमेशा ये बात रहे कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं As soon as we lose that sadhu sangha, satsanga, then it's all asatsanga, then it's all that vibration, it's material vibration, will just contaminate the consciousness. और जैसे ही हम सत्संग का साधु संग त्याग करते हैं तुरंत ही असत्संग होता है और ये असत्संग शब्द तरंग हमारी चेतना को दूषित करता है हमारा पतन करता है Then you develop all materialistic desires, sinful desires by that asatsanga. और तब आप सारे भौतिक इच्छा पाप कर्म की इच्छाएं अपने अंदर प्रकट होने लगती है सत्संग Then we forget that we are eternal servants of Krishna. और तब हम भूल जाते हैं कृष्ण के नित्य दास हैं And then we become nicely situated as, servants of Maya. और हम बहुत अच्छे से माया के सेवक बन के बैठे हैं So the root cause of that problem is asatsanga ये समस्या का मूल कारण है असत्संग and this material sound vibration, और ये भौतिक शब्द तरंग whereby Maya is polluting, capturing mind, intelligence, and senses on a materialistic platform, जहाँ माया मन बुद्धि इंद्रिय को जकड़ के रखी है and degrading consciousness and degrading our mentality and our behavior. और हमारी चेतना का पतन कर रही है हमारे व्यवहार का हमारे मानसिकता का So somehow or other, this is the somehow or other, how they lost their consciousness and lost their connection to Vedic culture. तो इस तरीके से वो उन्हें अपनी चेतना और वैदिक संस्कृति के साथ अपना संपर्क खो दिया Otherwise, prior to that, the whole world was under the Vedic culture. वरना इसके पूर्व पूरा विश्व वैदिक संस्कृति का भाग And therefore, this battle Kurukshetra, then all of the different parts of the world, they also joined. They joined this party or that party in the battle of Kurukshetra. और इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में पूरा विश्व में भाग लिया किसी ने एक पार्टी और किसी ने दूसरी पार्टी की तरफ भाग लिया So the Vash means the whole world, all of those different countries, everybody joined in this world war. तो भारतवर्ष यानी कि पूरे विश्व ने इस विश्व युद्ध में In this battle of Kurukshetra. कुरुक्षेत्र के युद्ध में Prabhupada says that means that the whole world fought. प्रभुपाद कहते हैं इसका मतलब पूरे विश्व ने युद्ध किया And that was the greatest world war 5,000 years ago. और ये सबसे बड़ा विश्व युद्ध था Even you see other wars, there's different countries, few countries here, a few countries there. Not every single country is joining the world war. World War I, World War II, right? यहाँ तक कि आप प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में देखेंगे तो उसमें भी कुछ ही देश जो है एक साथ लड़ाई कर रहे थे सारे विश्व के देश एक साथ लड़ाई नहीं कर But in this war, everybody joined in there. लेकिन इस युद्ध में सभी लोग इसमें भाग लिया Prabhupada said that means that the whole world fought. प्रभुपाद कहते हैं इसका मतलब पूरे विश्व ने युद्ध लड़ा So Prabhupada said, so the point is that the Vedic culture means Krishna culture. प्रभुपाद बताते हैं मुख्य बात यह है कि वैदिक संस्कृति का मतलब है It कृष्ण की means संस्कृति Krishna consciousness. इसका मतलब कृष्ण भावना में So if we are not Krishna conscious, we're not in Vedic culture. अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं तो हम वैदिक संस्कृति में नहीं हैं We can just say like from traditional, kind of cultural or, your birth, like yes, we're born into Vedic culture. But really, technically, Vedic culture means Krishna consciousness. अगर आप रीति रिवाजों के माध्यम से सांस्कृतिक तरीके से या किसी एक विशेष परिवार में आपका जन्म हुआ कह सकते हैं कि एक तरीके से वैदिक संस्कृति के भाग And Prabhupada's preaching in England, where there's so many Indian people that were born in India, and Indians there, I'm sure, were there in London when Prabhupada was preaching.
तो जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे इंग्लैंड में, तो निश्चित ही वहाँ पे भी कुछ भारतीय लोग ऐसे होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ था, और या कुछ लोग जो इंग्लैंड में अब रह रहे हैं। I think at that time they probably had the most amount of people outside of India, right? Indians living in another place, I think. Is that right? और उस समय जो है सबसे ज़्यादा भारतीय जो कहीं रहते थे उस देश में रह रहे थे। So you can assume that there's many Indian people sitting in that audience. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सारे भारतीय दर्शक Especially in London. विशेष करके लंदन में। Maybe out in the countryside, other places may be a little different, but there's the money center in London, city of London, right? You think the Indians are leaving India to go any other place but the city of London? No. जो है ये सिटी ऑफ लंदन जो है ये सबसे पैसे वाला जगह है, तो वहाँ पे ये भारतीय लोग वहाँ गए थे पैसे कमाने के लिए। Banking center of the globalist regime. तो ये जो पूरे विश्व को नियंत्रण में लाना चाहते हैं, इनका सबसे मुख्य केंद्र है। And so Srila Prabhupada is preaching that we are coming here to try to revive the old Vedic culture. और श्रील प्रभुपाद महाराज जाकर ये प्रचार कर रहे थे, हम यहाँ आए हैं पुराने वैदिक संस्कृति को स्थापित करने के लिए। The real Vedic culture, असल वैदिक संस्कृति, which means Krishna consciousness. इसका मतलब है कृष्ण भावना। Not the Vedic culture that you think that you're a part of. वो वैदिक संस्कृति नहीं जो आप सोच रहे हो इसके आप भाग। Because you're sitting in an Indian body, even if you're in another place with all sinful desires. हो सकता है आपने भारतीय शरीर लिया हो, लेकिन कहीं और आप दूसरे देश में बैठे हैं सारे पाप करने की इच्छाएं लेकर। Vedic means Vedas. तो वैदिक का अर्थ है वेद। Krishna's Vedas are coming from the supreme personality of Godhead Himself. तो ये सारे वेद परम पुरुषोत्तम भगवान से आते हैं। Those are all the instructions to the conditioned souls, how they can purify and qualify themselves to become God conscious, Krishna conscious. ये वो सारे निर्देश हैं कैसे कोई बद्ध जीव उन निर्देशों को पालन करके कृष्ण भावित हो सकता So they can end the cycle of birth and death, go back to Godhead. ताकि वो जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म करके भगवत धाम वापस आ सके। Krishna says in Bhagavad Gita, by all the Vedas I am to be known. कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में सारे वेदों के माध्यम से तुम मुझे। So to know Krishna means to understand that He is the supreme Lord and that we are all His eternal servants. तो कृष्ण को जानने का अर्थ है समझ पाना कृष्ण परम भगवान है और सब हम सभी उनके दास। So we're not realizing that means we're not realizing the purpose of the Vedas. तो अगर हम इसका साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वेदों का साक्षात्कार नहीं कर Therefore, रहे we're not Krishna conscious. इसका मतलब हम कृष्ण We're भावना not नहीं हैं। practicing Krishna culture means we're not in the Vedic culture. तो हम कृष्ण संस्कृति का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम वैदिक संस्कृति का भाग नहीं हैं। So we're just assuming. तो हम बस केवल दिखावा कर रहे हैं वैदिक संस्कृति में। But if you look at it from the highest definition, Prabhupada speaking Tattva Vichar, really, what is Vedic culture? लेकिन अगर आप असल परिभाषा देखेंगे जो प्रभुपाद बता रहे हैं असल वैदिक संस्कृति क्या है। So he's preaching to the people in London who think they're in the Vedic culture and saying, actually, we're trying to come and give you really what is really Vedic culture. प्रभुपाद लंदन में उन लोगों को प्रचार कर रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो वैदिक संस्कृति का भाग है, उनको बता रहे हैं कि असल वैदिक संस्कृति हम आपको देंगे। Prabhupada says the point is Vedic culture means Krishna consciousness. और श्री प्रभुपाद बता रहे हैं बात ये है कि वैदिक संस्कृति मतलब कृष्ण की संस्कृति है। And this Krishna consciousness movement is meant that we are trying to revive the old Vedic culture. कृष्ण भावना का एक आंदोलन बना है इस पुरातन वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए। The old Vedic culture means the eternal Vedic culture. पुरातन वैदिक संस्कृति का मतलब है जो नित्य वैदिक संस्कृति। So it's very old. तो ये बहुत ही पुरानी है। You hear like, oh, so you're coming to give some old thing, right? आप सोच रहे हैं कुछ पुरानी चीज देने के लिए। It means this is the eternal understanding of Vedic culture means Krishna culture. और ये नित्य ज्ञान है कृष्ण संस्कृति मतलब वैदिक संस्कृति। So we're coming to try to revive that understanding of the Vedic culture. तो हम यहाँ आकर उस वैदिक संस्कृति की समझ को Throughout the प्रयास whole करें world. पूरे विश्व में। So it was the whole world, then everything went back to India. तो पूरा विश्व जब वापस भारत आ रहा है। Then in India, then gradually that shrunk because the people living in India, how many of them are Krishna conscious? और अब भारत में भी जो इतने सारे लोग हैं उनमें से कितने कृष्ण भावना पाते हैं। So then the establishing Krishna consciousness in this, sampradaya and this, how do you say, Vaishnava sampradaya. This is meant to first purify and perfect your life.
तो ये कृष्ण भावनामृत जो संप्रदाय के माध्यम से स्थापित किया गया, इसका निर्माण किया गया है आपके जीवन को शुद्ध बनाने के लिए And सबसे then पहले, spread it. और फिर इसको प्रचार All of those करते हैं। Vaishnavas, they perfected it, they established it, they practiced it, and they spread it within India. तो सबसे पहले ये वैष्णव यहाँ पर आए, उन्होंने इसका अभ्यास किया, पूर्ण रूप से प्राप्त किया और प्रचार They किया, established विशेष करके वहाँ the dharmas उन्होंने बहुत सारे धामों को स्थापित किए हैं and all of the scripture. और बहुत सारे शास्त्र What स्थापित is किए real Vaishnavism versus what they were passing off as Vaishnavism? और असल वैष्णवता क्या है और इसके बजाय जो दिखा रहे हैं कि What वैष्णवता is क्या है, the actual Siddhanta? असल सिद्धांत क्या है, What does it mean to be a Vaishnava? वैष्णव होने का मतलब क्या होता है। And then Prabhupada established all of his temples also in India. और प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे मंदिर भी भारत में निर्माण किए, Because then when you go out to try to establish it, then you're going to try to bring all of these souls back to Vedic culture, right? क्योंकि जब बाहर जाएंगे प्रचार करने के लिए तो उन सारी जीवात्माओं को आप वापस यहाँ भारत में वैदिक संस्कृति में लेकर आएंगे। So Prabhupada said this is the purpose we're trying to revive this eternal Vedic Krishna culture throughout the whole world. That's the original culture. तो शब्द को बता रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है कि इस कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में प्रचार करना और ये असल मूल संस्कृति वैदिक संस्कृति है। Because any other cultural history does not go beyond 3,000 years, and we discussed that yesterday. और पहले हमने चर्चा की थी, कोई भी अन्य वैदिक संस्कृति 3000 साल के पूर्व का इतिहास नहीं बता पाती। Practically there is no information. तो व्यावहारिक रूप से उनके पास कोई जानकारी नहीं है। So you see all of these demoniac people, they just cover what is the truth and what is spiritual and what is in the best interest of your soul. They just hide all of that information. तो ये असुर लोग जो हैं ये सारी इन जानकारियों को ढक देते हैं, संस्कृति को जानकारी ढक देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को ढक देते हैं, सत्य को ढक देते हैं। Because they want to establish themselves in their own cultures. क्योंकि वो स्वयं को और अपनी संस्कृति को स्थापित And करना their चाहते हैं। own people, and their own leadership, and their own government and philosophy. If they go back beyond that, then it's all Vedic culture. So they don't want to go that far back, right? तो वो खुद के लोगों को, खुद के नेताओं को, खुद की सरकार, खुद की सारी व्यवस्था को, शासन को स्थापित करना चाहते हैं। They come all the way back, yeah. तो उतने समय तक का ही वो इतिहास देते हैं, उससे पूर्व का इतिहास यानी कि फिर वैदिक संस्कृति आ जाएगी। They go all the way back and they find out that the whole world was Krishna conscious and practicing Vedic culture. That means that that's proof that you are a deviated demon. So they don't want to establish that, right? तो अगर इससे हजारों सालों पूर्व पूरे विश्व जब कृष्ण भावनामृत थी, अगर वो उसको स्थापित नहीं करेंगे तो अगर अपने आप को स्थापित करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये असुर है। So before they got deviated and basically by physical force took over every other country, they basically don't go beyond that criminal activity back to like a spiritual culture or Vedic culture. तो इन्होंने पूरे विश्व के ऊपर शासन करने का शासन स्थापित किया और लोगों को पूर्व वैदिक संस्कृति की तरफ जाने से रोक दिया। And there's like one saying, like whoever is in charge, whoever has all the guns and the ammunition and the weapons and the armies and the navies, right? They write the history books. और ऐसा कहते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं, गोला बारूद है, सेना है, नौसेना है, वायुसेना, ये सारे यही लोग असल में इतिहास लिखते हैं। Right? So then you're raised in England, right? Colonial place, right? Then everybody's reading their history books, right? और इंग्लैंड में लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे जो इतिहास की किताब है उनको वही सिखाया जा रहा है जो इन लोगों ने पढ़ा है। World history according to basically imperialistic place or say country that goes in and just destroys every culture, divides the people, get them to have a war against each other and then destroy them and then take over their country and then control the people and take all their natural resources. तो इन लोगों का इतिहास ये है कि वो किसी भी देश में जाते हैं, फिर उनके लोगों के बीच में फूट डलवाते हैं, उनके बीच में युद्ध करवाते हैं, फिर उनको जो कमजोर हो जाते हैं उनके ऊपर शासन करके उनके सारे
संपदाओं का, प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल करते हैं। So this is all demoniac ये सब activity. आसुरिक And very clever demoniac activity. और ये बहुत चतुराई वाला आसुरिक कर्म है। And so you see with this Duryodhana and Dhritarashtra, this side, right? These are people that are envious. They want to control everything, control the world. So the same mentality. तो आप देखेंगे दूसरी तरफ दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये इस तरह के असुर लोग थे जो सभी पूरे विश्व को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। I wonder how many English people fought in Kurukshetra on their side. और मैं विचार कर रहा हूँ कि कितने अंग्रेज लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। Think about that. तो सोचिए इसके बारे Same mentality, same demoniac mentality, same material desire, right? में। वही मानसिकता वाले लोग, वही भौतिक इच्छाओं, वही आसुरिक व्यवहार वाले लोग। So they were all there in Western Europe, and many of them were previous Kshatriyas and other people who originally came from India, right? So they're coming back to join the war. You think they're going to join Krishna's side? तो ये सारे पश्चिमी देश के लोग जो पहले क्षत्रिय थे, यूरोपीय और अन्य देशों के लोग, तो ये लोग जो आसुरिक एक ही मानसिकता वाले लोग हैं, ये लोग वापस अब युद्ध करने के लिए जब यहाँ आ रहे हैं, तो या क्या वो अर्जुन की तरफ या कृष्ण की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे? So this is the original culture. तो ये है मूल संस्कृति। Don't get puffed up. आप लोग ज़्यादा अहंकार मत करिएगा। First make your life perfect, पहले अपना जीवन सफल बनाइए, and then dedicate it to help everyone else. और अपने आप को समर्पित कीजिए सभी लोगों की मदद करने के लिए। And then when you think you can be puffed up then, और सोचिए उसको करने के बाद आप अहंकार होने के ego बाद and सोचिए। pride is destroyed already, so you have no time to get puffed up. उस समय तक आपका अहंकार और दम्भ अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, तब तक तो फिर आपके पास समय नहीं होगा अहंकार। Now I can get puffed up, and it's like, why should I get puffed up? तो सोचेंगे आप मुझे बड़ा मेरे अंदर तो अहंकार होना चाहिए, लेकिन तब आपको साक्षात्कार होगा मैं तो I अहंकार just क्या got करूँ? some mercy, you know? मुझे तो कृपा मिल चाहिए, What's to get puffed up about? तो अहंकार लेकर क्या करूँगा? So this is very interesting because if you understand the history part of it, then you can see how Krishna did everything in his incarnations, in his devotees coming, in his plan how to, revive Krishna consciousness in India, and then how to build the place which, everybody can then come back to and then try to practice and understand what is Vedic culture. It's very interesting to look at it historically. It makes sense. It's not just some philosophical point which is disconnected from history or culture or a greater kind of game plan that the Lord has how to deliver all the fallen conditioned souls. तो अगर आप इस इतिहास को देखेंगे तो ये विश्व इतिहास इतना बेहतरीन है, आप देख सकते हैं कि भगवान ने कैसी योजना बनाई, उन्होंने स्वयं अवतार लिया, अपने भक्तों को भेजा कृष्ण भावनामृत को स्थापित करने के लिए। तो आप देख पाएंगे कि कैसे ये इतिहास से बहुत संबंधित है, ये केवल कोई सैद्धांतिक बातें नहीं है, इसका इतिहास से बहुत सदा संपर्क है, और कैसे उन्होंने इतने अलग तरह के चीजों को स्थापित किया ताकि वैदिक संस्कृति को वापस लाकर यहाँ लोगों के लिए सुविधाएं दी जा सके वैदिक संस्कृति का पालन करने। So all these demons who tried to take over the world, they hid the actual original culture. They hid the information about that spiritual culture, which is the original culture. तो ये जो असुर जो पूरे विश्व पे शासन करना चाहते थे, इन्होंने इस मूल वैदिक संस्कृति को ढक दिया ताकि लोगों को कोई जानकारी न मिले इस असल वैदिक संस्कृति की। And all the greatest scholars that are known in the world today, nobody really talks about Vedic culture. और जितने बड़े-बड़े विश्व के विद्वान को आप देखेंगे उनमें से कोई भी वैदिक संस्कृति के बारे में बात And नहीं even करता। in India, when they try to talk about Vedic culture, they're writing, doing theses on Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, right? It's all, they have no understanding of what it is. It's mythology, or they're just some kind of, false history just to make some kind of a point. They don't understand, they don't have faith and understanding of the actual culture. Even the people from India, even the greatest scholars in India don't even have faith in what is Vedic culture. यहाँ तक कि भारत के भी बड़े-बड़े विद्वान को भी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है इन वैदिक संस्कृति में। वो इनको कहानियाँ मानते हैं, भगवद गीता के ऊपर बहुत सारे थीसिस और बहुत सारे वैदिक संस्कृति के बारे में विवरण देते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल गलत तरीके से समझते हैं यहाँ तक कि भारत के विद्वान लोग। This is very painful to have some guy from America saying that you're not really in the Vedic culture and you have no real culture. You're just posing as
part of the Vedic culture. It's like, who's this guy, you know? ये बहुत अच्छी What's your है culture in America? अमेरिका 200 years old culture? अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत के लोगों का बता रहा है कि भारत के लोगों को ही वैदिक संस्कृति का असल ज्ञान नहीं है ये अमेरिका के लोग हमें पता नहीं इनका संस्कृति केवल 200 साल पुरानी है I'm just reading what Prabhupada's saying. मैं तो केवल वही पढ़ रहा हूँ जो प्रभुपाद दे रहे हैं And then they come up with this Darwin's theory. This is all just some kind of theory. It's not perfect. They're just speculating. They're just coming up with some of the things. Can you imagine they would rather create a theory like Darwin's theory than to acknowledge what was going on before they basically raped the world and hid the original Vedic culture. They would rather come up with that. ये ऐसे लोग How हैं crooked is this? ये इतने बुरे लोग हैं वैदिक संस्कृति को छुपाने के लिए ठगने के लिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी ना मिले डार्विन जैसे सिद्धांतों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं वैदिक संस्कृति की सराहना करने की बजाय And then they just divert everybody's attention, and then it's trained in the schools that nothing was happening before 3,000 years, and really, like I said, we were just cavemen, and we came up before we were monkeys, and then we went from 4 legs onto 2 legs, right? This is Darwin's theory, right? So proof of that. Nobody's proving that that's accurate. और विद्यालयों में यही शिक्षा दी जाती है बच्चों को कि आज से 3000 साल पहले कोई संस्कृति नहीं थी लोग गुफाओं में रहते थे और धीरे-धीरे वो 4 पैरों से वो 2 पैरों में आए और फिर इस तरह से मनुष्य धीरे-धीरे बंदर से परिवर्तित हुए ये And शिक्षा then दी they're जाती है sitting in the Western universities and you know, in America and Europe, right? And everybody's learning all of those theories. Nobody's talking about Vedic culture there. और अमेरिका के और विश्व के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में ये शिक्षा दी जा रही है डार्विन की शिक्षा है वैदिक संस्कृति की कोई शिक्षा नहीं दी जा रही The only, and then in growing up, the only pictures from India was all like poor people like laying on the side of the road. Like that's what is India. You know? Destitute, poor, you know, no education, completely like, you know, pathetic situation. That's all that's pumped into the Western countries in America. This is what is India. और अमेरिकी देशों में जब जाएंगे तो भारत के बारे में वहाँ तस्वीर दिखाई जाती है जितने गरीब रास्ते के किनारे इस तरह से लोग पड़े हैं जिस तरह का दुख में स्थिति जो भारत की है ये तस्वीर दिखाई जाती है Every time they talk about India, they say go near some bus station in the city and they say look at these people lying on the sidewalk. Seriously. That's all you ever see. You're like, wow, that's India? They're really in trouble there, you know? देखते हैं कि कहीं बस स्टेशन रेलवे स्टेशन के वहाँ बड़े बड़े लाइटें हैं कोई कैसी दुखमय स्थिति है यही एकमात्र चीज दिखाई देती है Then you wonder why it's like that, right? और अब आप चिंता कर रहे हैं ऐसा क्यों So हुआ people are ignorant, completely ignorant, because it's not in the universities, it's not in the colleges, right? The media, controlling all the media, is pumping into people's senses what is India. So there's no understanding of really what is India and what is, Indian culture and history. There's no information about that. और बाहर के जितने बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में भारत की इस वैदिक संस्कृति की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है सारी मीडिया जिनको इन्होंने खरीद कर रखा है उन्होंने लगातार यही जानकारी लोगों के अंदर भरते रहते हैं भारत की स्थिति ऐसी है कोई वैदिक संस्कृति का ज्ञान पूरी तरह से अज्ञानता में रखते There was not one Indian person in my town. मेरे शहर में एक भी भारतीय The only Indian person I know was Gandhi. एकमात्र भारतीय व्यक्ति जिनका मैं जानता था वो गांधी था You ask people, do you know anything about India? They say, oh, I saw one movie about the Gandhi, you know. आपसे पूछते थे आप भारत के बारे में कुछ जानते हैं मैं कहता था हाँ मैंने फिल्म देखी है गांधी की You know, the British government saying these people have no, they're like aborigines, they have no, no culture, they have no religion, they have no spirituality, right? They need to be invaded and educated. ये जो ब्रिटिश सरकार थी ये कहते थे ये भारत के लोग जो है जंगल में रहने वाले कबीले लोग हैं इनके पास कोई धर्म नहीं है कोई संस्कृति नहीं है इनको थोड़ी शिक्षा देने की इनको थोड़ी प्रकाश दिखाने की जरूरत है So that's the world is brainwashed into understanding India is like this. तो पूरे विश्व को इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया भारत के बारे में ये तस्वीर And then of course the Indians, who were not actually in Vedic culture or Krishna consciousness, it's all corruption.
जो भारतीय जो असल में वैदिक संस्कृति का भाग नहीं है, ये पूरी तरह से ये सब असल में भ्रष्टाचार है। I've been here for many years. Many times they said, corruption is in India's DNA. कई बार मैंने सुना है ये भ्रष्टाचार भारत के डीएनए में है। जी It's part of just the way of life. It's not even considered bad. It's normal. कहते हैं ये उनके जीवन का एक भाग है, इसको तो बुरा तक नहीं मानते, कहते हैं ये बहुत सामान्य बात है। Everybody's doing it, right? हर कोई कर रहा है। This is how you survive. इसी तरीके से हम बचे So हुए it's हैं। about survival and everybody's doing, then there's nothing wrong with it, right? अगर ये जिंदगी बचाने के लिए करनी है और सभी लोग कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है। So that's Vedic culture. तो क्या ये वैदिक संस्कृति है? So all this corruption also didn't really help everybody's impression about India. और ये भ्रष्टाचार ने भी लोगों के अंदर और ज़्यादा बातें ला दी भारत के बारे में। And all the people flooding out of India into other countries are saying there's so much corruption in there, the police are corrupt, this is corrupt, that is corrupt. It's everywhere. और यहाँ तक कि भारत के लोग भी जो बाढ़ की तरह दूसरे देशों में जा रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं भारत में इतना भ्रष्टाचार है, पुलिस करप्ट है, सब कुछ वहाँ पे भ्रष्टाचार। So there's no education, there's no information. तो कोई असल शिक्षा, कोई जानकारी नहीं है। I was telling devotees when I first read the Srimad Bhagavatam, I was like, this is actually India, is the Srimad Bhagavatam. मैं भक्तों को बताता हूँ जब मैंने पहले श्रीमद् भागवतम पढ़ा तो मुझे लगा कि भारत में ऐसा होता है। That's the first, how do you say, exposure to, Vedic culture and Vedic history and spirituality, intelligence and knowledge and organization and management, all of the, the things required in a great, culture. That was the first time I understood that by reading Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम पहली बार पढ़ के मेरे सामने जो चीजें उभरी कि ये संस्कृति, ये ज्ञान, ये सभ्यता, ये शिक्षा, ये सारी चीजें जो हैं ये भारत में मौजूद हैं। Thanks to Srila Prabhupada. धन्यवाद श्री प्रभुपाद। Otherwise, we wouldn't have got any information really. वरना हमें असल में कोई जानकारी नहीं मिलती। Now you see Vrindavan and Mayapur, all these buildings and temples, everything coming. Who did all of that? Srila Prabhupada. और आप देखिए वृंदावन, मायापुर में ये सारे शहर बिल्डिंगें बनी हैं, मंदिरें बन रही Rice fields. हैं। ये पूरा जगह केवल खेती का मैदान हुआ करता है, चावल का। Just some dirt roads in Vrindavan, right? और वृंदावन में कुछ धूल वाले रास्ते हुआ करते There was no buildings, there was nothing there. कोई इमारतें नहीं, कुछ भी नहीं। By Srila Prabhupada's coming there and bringing devotees from around the world, that's what has built up these places. श्रील प्रभुपाद जब इन सड़कों पे अपने विदेशी भक्तों को लेकर आए, उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पर उभरी। So Prabhupada is telling that we are trying to revive the old Vedic culture, and we're going throughout the whole world to revive that original Vedic culture. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं हम इस मूल वैदिक संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास करें और पूरे विश्व में जाके इस वैदिक संस्कृति को प्रचार करने का प्रयास करें। And Prabhupada says, so what was the culture before 3,000 years? The culture was Krishna consciousness, Krishna culture. और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि 3000 साल पहले कौन सी संस्कृति थी, तो वो कृष्ण भावनामृत कृष्ण संस्कृति थी। And then Prabhupada's quoting from Bhagavad Gita, where Krishna is saying that this knowledge was passed down from the sun god and through all the different Rajashis and disciplic succession from the Lord himself. और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बता रहे हैं कि कैसे सबसे पहले सूर्य देव को मिला और उनके बाद धीरे-धीरे ये परंपरा के माध्यम से नीचे राजर्षियों को ये ज्ञान मिलता। So all those families came from the sun planet and from the moon planets. तो ये परिवार सूर्य लोक, चंद्र लोक से आए थे। All of those Kshatriyas. ये सारे क्षत्रिय। Prabhupada said, so there was interchange of population long ago, not only with the moon planet, but also with the sun planet. तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो आबादी मिलकर आई चंद्र लोक से और सूर्य लोक से भी और पृथ्वी लोक में रहे। That's interesting. बहुत दिलचस्प बात So है। all the personalities from the moon planet and the sun planet, they were actually coming here in order to, to develop this planet. तो चंद्र लोक और सूर्य लोक से यहाँ वो लोग आते थे ताकि इस पृथ्वी लोक को उन्नत बनाया जा सके।
And that's why when Prabhupada, when they went to the moon, I remember as a kid, we watched it on the TV when they went at nighttime and they, we had to stay up late at night to watch the pictures when they went onto the moon from black and white television. छोटे बच्चे थे तो चंद्र में जाने के लिए तैयारी की गई थी और हम टीवी में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है उसमें तस्वीर देख रहे थे कि जब वो देर रात तक जगना पड़ा था ये देखने के लिए। And we asked our parents, can we stay up to watch them, land on the moon? और हम अपने माता पिता से पूछ रहे थे क्या हम रात को जगकर देख सकते हैं कि जब वो चंद्रमा पे उतरेंगे? Yes, it's so historical, definitely you have to watch it. हमने कहा ये बहुत ऐतिहासिक है, अवश्य आप लोगों को इसको देखना चाहिए। This is a big thing, right? Landing on the moon and they're all jumping around. Slow motion, and it's like really interesting, right? It was all filmed in Hollywood. I found that out later, कि वो चांद उतरे और इधर उधर कूदने लगे, लेकिन ऐसा देखने में लगा वो चांद उतरे हैं पर बाद में पता चला वो उसको फिल्म बनाया गया था हॉलीवुड में। I even found the studio where they actually made those films. असल में मैंने उस स्टूडियो को भी देखा, पता चला उसके बारे में जहाँ पे ये फिल्म बनाई गई। We'll discuss that another time. उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। But when Srila Prabhupada came, he was saying, this is a total scam. There's no way they went to the moon. The moon planet is like heavenly planet. These people are very, very elevated people. There's a bunch of rocks and dust and dirt there. This is not the moon planet. चंद्रमा में जाने का प्रयास किया। चंद्रमा में जाना बहुत ही कठिन नहीं है। स्वर्ग लोक है एक तरह से और ये वहाँ से केवल धूल पत्थर और मिट्टी निकलती है। You're all just bouncing around in some kind of thing. वो बस फिल्म में दिखाया जा रहा था बस कूद रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। Did you see all the families from the moon and the sun that were coming to Earth planet? Did you see them over there in the video? No, in the movie, no. तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उसमें आपने देखा कि चांद के या सूर्य लोक के जो लोग वहाँ रहते हैं उनके कुछ परिवारों के लोगों को आपने वहाँ देखा उस वीडियो में। And then they had people after that. They were selling rocks from the moon. और उसके बाद कुछ लोग आए जो चांद से जो पत्थर लाए गए थे वो उसको बेच रहे थे। They said some guys when they came back they put some rocks in their pocket, and then they're selling them for like big dollars, कह रहे थे जो It's like I gotta buy some moon rocks, कह रहे थे जो वहाँ लोग गए थे उन्होंने अपने जेब में कुछ पत्थर भर कर ले आए थे और वो उनको बेच रहे थे कुछ डॉलर देने पर वो मैं चांद से आए वो पत्थर खरीदना चाहता हूँ। So the corruption didn't start in India. Let's put it that way. ऐसा समझिए कि भ्रष्टाचार भारत से शुरू नहीं हुआ है। Those people who were kicked out came back later, really happened. तो जिन लोगों को बाहर निकाला गया बलात्कार के वो वापस आ गए ऐसा हुआ था। There was no corruption before that. उससे पहले कोई करप्शन नहीं था। Did you like this discussion? Are you all right? क्या आपको ये चर्चा पसंद आ रही है आप लोग ठीक है? I think it's very interesting. It's not just some philosophy that's not connected to anything. तो मुझे ये बहुत दिलचस्प लगी क्योंकि ये केवल कोई सिद्धांत नहीं है जिसका किसी को संबंध के In a historical context. ये पूरी तरह से ऐतिहासिक तरीके से बिल्कुल तथ्यों के आधार पे। So this culture, this Krishna culture, Vedic culture, this is avyayam, means it's inexhaustible, means it's coming from spiritual world. तो ये कृष्ण का संस्कृति अव्यय है जो कभी खत्म नहीं होती यानी कि ये आध्यात्मिक जगत से आ रही है। It's existing eternally. और ये नित्य रूप में मौजूद रहती है। But it was spoken first to me, Krishna says, and first by me to the sun god Vivasvama. कृष्ण बताते हैं सबसे पहले ये मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया। So Krishna telling the sun god Vivasvama कृष्ण सूर्य देव विवस्वान about this Vedic culture, about this Krishna culture. इस वैदिक संस्कृति और कृष्ण संस्कृति के बारे में। Just like any head man, just like in England, the executive head is Queen Elizabeth. जैसे इंग्लैंड की सबसे प्रमुख व्यक्ति है क्वीन एलिजाबेथ। Of course, she's a German Nazi, but that's another question. वैसे वो जर्मनी की नाज़ी है, लेकिन ये और अलग ही प्रश्न है उसमें महिला के बारे में नहीं कहा। But for the time being, let's just say the Queen of Elizabeth, right? The Queen of England.
लेकिन चलिए वर्तमान में हम समझने के लिए कहते हैं जो इंग्लैंड की महारानी And then in America, the president was Mr. Nixon, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट निक्सन another corrupt fellow. और एक भ्रष्ट That's व्यक्ति a whole nother story as well. और उनकी भी एक अलग कहानी है So formerly, there were only one executive head in each planet. तो पूर्व में पूरे एक लोक का सिर्फ एक ही व्यक्ति थे होता है So not that, that's why they don't want to talk about, because when they establish their countries and their authority and their control, right? They don't want to say, actually, we stole this from the one person who was actually in charge and owned everything. तो जब ये व्यक्ति अपने अपने देश के बारे में बताना शुरू करते हैं कि उन्होंने अपने देश के शासन के बारे में अपने अधिकार के बारे में और अपने नियमों के बारे में असल में तो वो ये नहीं बताते असल में एक ही व्यक्ति से उन्होंने ये सारा अधिकार छुड़ा They don't want to present that kind of history. तो वो इतिहास लोगों के सामने So it starts from when they were in control of that place. तो ये तब शुरू हुआ जब इतिहास तब से शुरू हुआ कहते हैं जब वो शासन में आए सत्ता में आए So formally, Prabhupada says there's one executive head for each planet. तो प्रभुपाद बताते हैं पूर्व में हर एक ग्रह के लिए एक ही व्यक्ति Bharatavarsha as the planet. तो ये पूरा भारतवर्ष एक लोग Where at that time every country on the planet was Krishna conscious and following Vedic culture. और उस समय में इस पृथ्वी का हर एक देश कृष्ण भावित था और वैदिक संस्कृति का पालन करता था Because all those families were coming from Krishna's parampara. That's what he sent here to develop the earth planet. क्योंकि ये सारे परिवार कृष्ण परंपरा से आए थे और उनको पृथ्वी लोक में भेजा गया था इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए And 5,000 years ago, the chief king, the emperor, was Maharaj Parikshit. और 5000 साल पूर्व प्रमुख राजा थे महाराज परीक्षित So in each and every planet, there is a head man. तो हर एक लोक में एक प्रमुख व्यक्ति था And he's called by some name. और उनको किसी एक नाम से जाना जाता है So at the present moment, the sun god, the head man, in the sun god planet, his name in that planet, the sun, his name is Vivishwan. और वर्तमान में जो सूर्य ग्रह के जो सूर्य देव प्रमुख व्यक्ति हैं उनका नाम विवस्वान है Can these scientists think that they're going to go hang out on the sun planet? क्या कोई वैज्ञानिक सोच भी सकते हैं कि वो जाके सूर्य लोक में Let them try to film that in Hollywood. इसलिए देखते हैं वो कैसे उसका फिल्म बना रहे हैं Something just some rocks and some clay and some dirt, right? How about a blazing fire? Let's see you walking around, bouncing around over there in your suits, you know what I mean? तो हमारे चांद में जैसे मिट्टी है धूल है पत्थर है वहाँ पे वो उछल कूद कर रहे हैं अंतरिक्ष में जाके लेकिन सूर्य लोक में जहाँ आग है वहाँ कैसे ऐसे उछल कूद करेंगे चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं Prabhupada said if you want to go to the sun planet, you need a body that's made of fire. प्रभुपाद बताते हैं अगर आपको सूर्य लोक में जाना है तो आपको एक ऐसा शरीर चाहिए होगा जो आग से बना हो To enter into that place. उस जगह में प्रवेश करने के लिए Right? And then these people are like, they're the authorities. और ये सारे लोग सोचते हैं ये अधिकारी हैं Right? Our history teacher never told us about this. Our authorities never informed us of this information. हमारे इतिहास के शिक्षकों ने हमें कभी ये बात सिखाई नहीं हमारे जो अधिकारियों ने हमें ये बात कभी सिखाई नहीं Bogus authorities, इसका मतलब हमारे जो अधिकारी हैं bogus historians, हमारे इतिहास के bogus शिक्षक फालतू हैं scientists, हमारे वैज्ञानिक bogus फालतू spiritualists, फालतू आध्यात्मिकवादी who लोग were हैं saying just after being a caveman, everyone became a Christian. वो कहते हैं कि जैसे पहले जब लोग आदि मानव थे उसके तुरंत बाद ईसाई धर्म आ गया So then Jesus came, everyone became a Christian. तो जैसे ईसा मसीह आए सब लोग Just ईसाई before that, they धर्म were monkeys और उसके पूर्व में सारे लोग बंदर हुआ or cavemen. या आदि मानव And everyone's like, oh, all right. ऐसे कहते हैं I got that, all right. वैसा वैसा It's part of our culture. ये हमारी संस्कृति का भाग है And you were the best people. You're the smartest, best people. Oh, okay, all right. और आप सबसे बुद्धिमान सबसे अच्छे लोग हैं सबसे अच्छी संस्कृति के लोग हैं आप लोग We used to be monkeys, now we're Christians, okay, that proves it, that proves it. हाँ हम पहले बंदर थे अब हम ईसाई बन चुके हैं Everyone else is living in the forest और बाकी सभी लोग जो है जंगल में रहते or on the side of the road, you know, dirt poor, you know. हैं या सड़क के किनारे गंदगी में गरीबी में जीते हैं So you see how much opulence you have, you see? तो आप देखिए आपके पास कितना This is why ऐश्वर्य you're great, this is why you're better than everybody else. इसलिए आप लोग महान हैं और इसलिए आप लोग सभी से बेहतर हैं
We've been brainwashed from day one. हमें पहले दिन से हमारा brainwash We're trying to get out of the brainwashing. अब हम इस brainwashing से बाहर निकलना And that same culture that brainwashed us is saying, this is brainwashing. और जो संस्कृति ने हमारा brainwash किया वो It's कहते a हैं brainwashing. ये वैदिक संस्कृति brainwashing है No, we went into brainwashing culture. नहीं हम थे पहले brainwashing We're trying to get out of it. और अब हम उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं Isn't it? ऐसा है And then we join an institution, and now you're again in a brainwashing culture. अब जब आप किसी एक संस्था से आप जुड़ चुके हैं फिर यहाँ पे brainwashing We are the ultimate managing authority. हम चाहे परम व्यवस्थापक अधिकारी It's like the Nazi regime all over again. Don't think, don't say anything, वैसे नाज़ी का शासन फिर से don't आ गया offend anybody. ना तो कुछ सोचो ना कुछ बोलो किसी के We'll shoot you, we'll kill you, we'll destroy you. गोली मार देंगे आपको खत्म कर देंगे Another variation of Maya. ये एक और माया का Another type of brainwashing. एक और तरह का ब्रेनवॉश And then whoever speaks the truth, oh, they're deviated, they're demons, be careful, don't listen to this information. और जो लोग सत्य बोलते हैं वो कहते हैं ये असुर हैं ये लोग प्रमुख सिद्धांत बता रहे हैं इन लोगों को सुनना नहीं चाहिए You'll go to hell. आप लोग नरक में जाएंगे और बहुत कष्ट When they ask all these totalitarian regimes, communism and fascism and all these Nazis and everything, how did all these people just go along with all of this stuff? And they said, we just used fear. और आप देखेंगे इतिहास में कि कैसे ये साम्यवादी लोग और नाज़ी लोग कैसे इन्होंने पूरे इन सारी चीजों को करते हुए साम्राज्य शासन किया तो उन्होंने भय के आधार पर वो भी प्रशासन So this whole thing about nuclear weapons, but this whole thing, it doesn't even exist. तो ये सारी चीजें परमाणु हथियार के बारे में बातें असल में Nuclear bombs, really, it's just big bombs. It's not nuclear bombs. Everyone's fearful for the nuclear holocaust. Just pay attention to what the government tells you, they'll save you, you know. Okay. परमाणु हथियार के बारे में बात करते हैं असल में परमाणु हथियार नहीं बहुत बड़े-बड़े बम हैं कुछ तरह का परमाणु हथियार Really? असल में What's going on? ये चल रहा Right? Everyone's fearful. है And COVID, okay, everyone lock yourself in the door. People are running around the car with the masks on, you know. अपने घर में अपने आप को बंद करके रखो और लोग का कार चला रहे हैं मास्क लगाकर So they just make some emergency, they make this crisis, this pandemic, it's a war, it's a nuclear threat, and then they just control the people using fear. इन्होंने लोगों के बीच में भय पैदा की ये दिखाकर कि कितनी बड़ी महामारी फैल रही है युद्ध होने वाला है इस तरीके से Yeah, you get some death shot, right? और आपको जो है ये सारे सॉर्स मिलते Even now they're saying, "What? Get your new booster. You need a booster." हैं यहाँ तक कि अभी भी वो कह रहे हैं आपको और बूस्टर लेने की जरूरत है Right? Everyone is like all this evidence. Everyone's dying. You know, it's like make sure you get your booster. सभी तरफ लोग जो ऐसे मर रहे हैं फिर भी वो कह रहे हैं आप सुनिश्चित करें कि आप ये बूस्टर शॉट ले रहे हैं And then all the news programming, right? Everything is literally pharmaceutical companies are financing the media, putting out this information. और 90% of their advertisement is pharmaceutical companies. तो ये मीडिया वाले जितने प्रचार कर रहे हैं 90% मीडिया वाले इनको ये दवाई की कंपनियों ने खरीद कर रखा है और वही Sponsored by Moderna, sponsored by Pfizer. फाइजर और इन सारे लोगों ने स्पॉन्सर किया है न्यूज़ चैनल We're gonna just pay for this, all this media, just because we want you people to be informed, well informed. हम इन मीडिया वालों को पैसे देते हैं ताकि आप लोगों को सही जानकारी पहुंचाई जा सके And then these people are all like CIA and Mossad, MI5, MI6. That's who's running the television shows, the media. और ये CIA, MI5, MI6 ये सारे लोग इन मीडिया को चला रहे हैं And then the people are like, oh, you know, and you say, where did you get the information? So I saw it on the television. लोग पूछते हैं आपको ये जानकारी कहाँ से मिल रही है वो कहते हैं मैंने टेलीविजन में देखा है It's like, well, did you double check it? Did you cross-reference it? Did you know? It's like, no, I just watched it on the television. और उनको जब पूछा जाता है कि आपने उसको सुनिश्चित किया ये खबर सही है नहीं वो कहते नहीं Authorities नहीं have टेलीविजन में spoken. देखा है कि वहाँ अधिकारियों ने ये बात कही है So, you know, you can motivate by love and affection and by truth.
तो आप प्रेम और स्नेह से किसी को प्रभावित कर सकते हैं या भय के आधार So पर। you can persuade and you can motivate, inspire people by the truth and by love and affection. तो आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं भय के आधार पे या प्रेम और स्नेह के आधार पे। To give them faith and confidence. उनको श्रद्धा और आत्मविश्वास देने के लिए आध्यात्मिक। And if you can't do it that way, then you have to do it by laws and control. और अगर आप उस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आपको कानून नियमों के आधार पर लोगों को And punishment and threat of punishment. और दंड देकर और दंड का दंड देकर। That's what's going on. ये सब So if you want to know if you're being brainwashed, then you see, are you there out of inspiration and love and affection and the truth? Or are you running on some kind of fear platform under some kind of control and manipulation and brainwashing with threat or fear or some type of suffering or punishment? What's motivating? What's inspiring? क्या चीजें प्रभावित करें आपको ब्रेनवॉश किया जा रहा है आपको दंड के आधार पे भय के आधार पे नियंत्रित किया जा रहा है या फिर आप स्वाभाविक रूप से उसको करने के लिए प्रभावित हैं। Any questions so far? कोई प्रश्न किसी का? Yeah? There's a verse in Buddha section that higher education. Wait a second. First of all, I'm not a scholar. सबसे पहले मैं I'm not an expert historian. We're all discovering this information together. मैं Okay? कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ पूरी इतिहास का नहीं हम सभी ये जानकारी खोज रहे हैं। We're hearing from those personalities who know what's going on. हम उन व्यक्तियों से श्रवण कर रहे हैं जो जानते हैं असल में क्या हो We're रहा है establishing the truth. और वो सत्य को स्थापित कर रहे हैं। We are simply listening to that and trying to understand it in a way that we can, assimilate it, understand it, and use it to our advantage. और हम इसको केवल सरलता से सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन में इस तरीके से एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम इसके I'm जीवन not में trying to इस्तेमाल sit कर here सकें। like the expert historian and scholar, explain all of these details. This is what I picked up. This is what I've learned. This is what I got to see in my lifetime so far. I was completely brainwashed before. तो मैंने ये अपने जीवन में Before ISKCON, during ISKCON, तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और ये सारा साक्षात्कार किया ये इतिहास ये सारी कुछ मैंने जमा की श्रवण की ISKCON में आने से पहले ISKCON में that's not Vedic culture. ये वैदिक That's not the संस्कृति real ISKCON. ये असल ISKCON है। Real ISKCON means Vedic culture. असल ISKCON का मतलब है वैदिक संस्कृति Consciousness. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना कृष्ण भावना Not what this is going on. It's just like Vedic culture. What's Vedic culture? ये सब कुछ चल रहा है ये वैदिक संस्कृति क्या है असल वैदिक संस्कृति क्या है Right? What is ISKCON? What is really ISKCON? ISKCON क्या है और असल ISKCON क्या है So when they say we're not part of ISKCON, I say no, you people aren't part of ISKCON. वो लोग कहते हैं कि आप लोग ISKCON के भाग नहीं हैं तो मैं कहता हूँ आप लोग ISKCON के भाग नहीं हैं Prabhupada, everything Prabhupada. So you don't even understand Prabhupada's books and teaching. You're too busy trying to, read the Sandarbhas and prove everybody that you're, a Manjari in separation. You know what I mean? बात इनको पता ही नहीं है कि प्रभुपाद की निर्देश नाम की शिक्षाएं क्या हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं संदर्भ और मंजरी ये सब कहानियाँ Sometimes I have to talk to these people, कभी मुझे इन लोगों से बात करनी पड़ती है And it's scary मुझे बहुत डर लगता है because they really believe they're on that platform. क्योंकि वो असल में मानते हैं कि वो उस स्तर में पहुंच चुके हैं They're insane. ये पागल लोग It's actually insanity. असल में ये पागलपन है It's just like if you go to a mental institution जैसे आप किसी and पागल there are crazy people in there, they're saying, yes, my name is Dr. So-and-so. वहाँ जाएंगे किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि मेरा नाम डॉक्टर ही है Right? And he's walking around and he's like treating the other crazy patients, He really thinks he's a doctor, आप देखेंगे वो पागल जो है दूसरे पागलों के पास जा रहा है और ऐसा नाटक कर रहा है जैसे वो डॉक्टर है And then all the other crazy people, they're calling him the doctor. He's the doctor. पागल लोग हैं पागल पागल वो पागल को डॉक्टर कहके बुलाते हैं It's insane. पागल So when I try to have like just even a human conversation, they don't even know how to have a human conversation. What to speak of? They're trying to make me think that they're, a Brijavasi from,
Vaikuntha. Are you kidding me? First become a human being. तो उनसे जो सामान्य मनुष्य वाले भी बातचीत नहीं कर पाते हैं इस स्तर पे है और ऐसा लगता है कि ब्रजवासी है सर पहले मनुष्य के स्तर में You first figure that part out, you know? पहले ये पता But then Prabhupada said, first become a perfect gentleman. पहले पूर्ण सभ्य व्यक्ति बनने का प्रयास You know, you went from a degraded hippie doing LSD and smoking marijuana, and all of a sudden now you're an eternal associate from Vaikuntha. आप पूरे से पूरे पति हिप्पी थे अचानक से भगवान धीरे-धीरे कृष्ण मार्ग का अभ्यास कर रहे हैं आप सोच रहे हैं कि आप बहुत उन्नत स्तर पे Like, with all due respect, Maharaj, looks like, you skipped a few steps, you know what I mean? महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा लेकिन मुझे लगता है आप कुछ कदम ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं And then when they're doing this whole thing, right, I thought, does he think I'm actually going to believe this? जब वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं नाटक तो वो ऐसा सोचते हैं असल में कि मैं उनका विश्वास करूँगा Maybe he's just seeing if I'll believe it or not, and then if I don't, then he'll just go back to being like a human being. तो वो ऐसा देखना चाहते हैं कि अगर मैं उनके नाटक के ऊपर विश्वास करने लगूंगा विश्वास नहीं करूँगा तो तुरंत वो वापस अपने मनुष्य के स्तर में आके Maybe he'll go back to being a perfect gentleman, you know? हो सकता है वो वापस आ जाएंगे अपने सही But I realize they have no idea. कि मैंने ये समझ They पाया are आपको कोई completely ज्ञान नहीं है brainwashed. उनको पूर्ण तरीके से ब्रेन वॉश And किया they गया have है no idea they're brainwashed. और उनको पता ही नहीं है कि उनको ब्रेन वॉश किया गया है Because they don't have a guru क्योंकि उनके पास कोई गुरु who's नहीं है saying, this is not reality, guys. It's not ladies, it's not reality. जो उनको बता नहीं रहा है कि ये असल में सच्चाई नहीं है This is another deviation, this is another variation of Maya. ये एक और विमुक्ता है माया का एक और प्रभाव है Without Krishna's mercy and Krishna's devotees' mercy, how will they understand they're in this type of brainwashing? तो कृष्णा की कृपा कृष्णा के भक्त की कृपा के बिना कैसे वो समझ पाएंगे कि वो ऐसी स्थिति में है Does it make sense? क्या इसका सही अर्थ बनता है Do you think this is going to be popular for me to preach like that? क्या आप लोगों को लगता है मैं बहुत प्रसिद्ध हो पाऊंगा इस तरह से प्रचार करने का But it's true. लेकिन ये सत्य It's है really true. Because I associated and heard directly from someone who is from that place. क्योंकि मैंने संग किया और श्रवण किया सीधे सीधे ऐसे व्यक्ति से जो असल में उस जगह के व्यक्ति हैं And I saw the effects of that association and the behavior and consciousness of someone who's actually from that place on that level of consciousness. It's a perfect example of that. So now I can see the difference between someone who's actually from there and someone who's posing like they're from there. तो You उनसे see? Before that, how do you know? तो उनसे संग करके मेरे अंदर जो प्रभाव दिखा उनका व्यवहार उनकी मानसिकता उनकी चेतना उनका भाव जिस स्तर पे थी वो बिल्कुल ही अलग स्तर से थी और तब मैं अंतर देख पाया कि कोई व्यक्ति जो उस स्तर में होता है और कोई व्यक्ति जो उस स्तर में नहीं होता दोनों के बीच में क्या अंतर होता है Does this make sense? Do you understand it in English or in Hindi? आप मुझे किस में पहले समझ रहे हैं इंग्लिश या हिंदी Both, right? Is he doing pretty good? क्या ये अच्छा कर रहा है He's doing good? All ये अच्छा right. कर रहा है ठीक है That's nice. ये अच्छा है So, somebody's got to speak the truth. किसी को सत्य बोलना होगा And it's not popular, believe me. और ये इतना And everyone will say, you're crazy. He's crazy. और सभी लोग कहते हैं ये पागल है He's deviated. वो भटका हुआ है We're not deviated. हम भटके हुए नहीं हैं But I told one Maharaj, I said, Maharaj, you see, I can't be cheated anymore by you people. मैंने एक महाराज को कहा कि मुझे आप लोग और ठग नहीं सकते I really went through all of that. ये सब चीजें मैंने कर ली Because now Maharaj, I saw the real thing. कि महाराज The real personality from that platform, from that place. अब मैं असल चीज देख चुका हूँ असल उस व्यक्ति को देख चुका हूँ जो उस दिव्य स्तर पे है Now I can see the difference. और अब मैं वो अंतर देख सकता हूँ Right? If you go shopping for a diamond and you don't know what is a diamond, then you're just going to buy some glass, some cheap glass, right? Even some fancy glass. आप हो सकता है अगर आपको हीरे के बारे में पता ना हो आप हीरा खरीदने गए हो तो आप कुछ चमकदार कांच खरीद कर लेकर आ सकते हैं But it's not going to be a diamond. लेकिन वो हीरा नहीं होगा And then what happens is, just like these brainwashing people, they just, okay, let's not talk about before 3,000 years. Let's skip that information.
जैसे ये लोग ब्रेन वॉशिंग करते हैं, जैसे इन्होंने आपस में बात की कि हम 3000 साल के पूर्व का इतिहास नहीं बताएंगे, because it's an inconvenient truth. क्योंकि ये हमारे लिए सही नहीं है। It gets in the way of their mentality and their narrative and being able to manipulate and control the masses of the people. ये उनकी मानसिकता, उनके विचार, उनकी योजना के विरोध में होगा, जिससे वो लोगों को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। So then what do these people do? फिर ये लोग उन्होंने क्या किया? They say we were all in Goloka Vrindavan. तो इन्होंने कह दिया कि हम सारे लोग गोलोक वृंदावन We're में all हैं, Nitya Siddhas. हम सभी नित्य सिद्ध हैं। No, there's eternally liberated souls, and then there are conditioned souls since time immemorial. और एक नित्य शुद्ध होते हैं और एक बद्ध जीव होते हैं जो अनंत समय से यहाँ पर बद्ध All अवस्था में those हैं। distinctions are there. तो ये सारा भेद है मौजूद। Right? Prabhupada said, out of all the things that he said in his books, in conclusion, Prabhupada said, nobody falls from Vaikuntha. तो श्री प्रभुपाद ने सारे बातों कहने के बाद अंत में निष्कर्ष में अपनी किताब में लिखा कि कोई भी वैकुंठ से नहीं गिरता। How's it possible? तो ये कैसे संभव है? Well, you've got envious in Vaikuntha, in Krishna Loka. आप वैकुंठ में कृष्ण लोक में आपके अंदर ईर्ष्या प्रकट हो गई। You've got contaminated there. There's no modes of material nature there. वहाँ पे आपके अंदर गलमस आ गया, वहाँ पे किसी भी तरह का प्रकृति का गुण नहीं है। Everyone's complete. It's ever increasing bliss every single day. Where's the room? Like one day there wasn't ever increasing bliss, so I decided to, be envious of Krishna and go and enjoy sense gratification. वहाँ हर दिन जो है आनंद लगातार बढ़ता रहता है। तो एक दिन जब आपका आनंद नहीं बढ़ा, तो आपके अंदर ईर्ष्या आ गई, कृष्ण के प्रति, अब मैं कृष्ण से अलग होकर आनंद करूँगा। Where did you pick up the enviousness in Vaikuntha? Can you please explain to me where that was hiding? Where was the enviousness hiding? Was it in some package? Was it under someone's bed? Was it in a back room at the factory? Like, where did you pick up the enviousness? Where exactly did you buy that? मैं आपको कहाँ मिली? किसी पैकेट में छुपा था, किसी के पेट के नीचे था, किसी फैक्ट्री के वहाँ पे खाने में पड़ा था। तो कहाँ से आपने ये उठाया ईर्ष्या? Because everything starts with the enviousness. सब कुछ इस द्वेष के से। Krishna says if you're not free from sin, you can't even go back to Godhead. कृष्ण ने कहा अगर आप पापों से मुक्त नहीं हुए तो आप ऊपर वापस नहीं जा सकते। No sinful desire, no sinful reaction. That's required before you go back to Godhead. कोई पाप नहीं, कोई पाप करने की इच्छा और ये प्रतिक्रिया नहीं, ये जरूरी है भगवान वापस आने के लिए। So it makes no sense. तो इसका कोई अर्थ नहीं। Prabhupada's okay, we all came from Krishna. प्रभुपाद ने कहा कि हम सभी कृष्णा से आए हैं। He is the eternal Father, the Lord and Master, seed-giving Father of every living entity. We're Krishna meant to be with our Father. नित्य पिता है, बीज प्रदाता पिता है, हम सभी के और हम सभी उनके पास जाने के लिए। So many things. How's Prabhupada going to preach to a bunch of hippies? बहुत सारी ये बातें हैं। प्रभुपाद कैसे ये बातें हिप्पियों को प्रचार करते हैं? Right? They spend 3 years doing LSD, hallucinogens every day, and all of a sudden, you're going to talk about, Vaikuntha. And they're like, yeah, man, I've been there. I saw God. I found out I was God. तो 3 साल से लगातार हर दिन वैकुंठ नशा करते थे। फिर उनको अगर बताया जाएगा कि आप वैकुंठ लोक में थे, तो कहेगा हाँ मैं वैकुंठ लोक में था, मुझे पता चला भगवान के साथ, मैंने भगवान को देखा है, मैं ही असल में भगवान हूँ। Right? They're like Shuddha Tama. Shuddha Tama. Right? Complete ignorance. पूर्ण अज्ञान। Right? Shudra is in Daivivanashram. शूद्र दैवी वर्णाश्रम में होते हैं। Okay, so human in the Shudra form is performing in Daivivanashram. तो मनुष्य जो शूद्र का जन्म है वो दैवी वर्णाश्रम में है। And Prabhupada said anything outside of Daivivanashram means not human consciousness. वो बताते हैं दैवी वर्णाश्रम के बाहर जो कुछ भी है वो मनुष्य स्तर नहीं होता। So that's why this information Vedas came from the spiritual world to India, because they're supposed to be practicing Daivivanashram in the Vedic culture. This information is meant for them. तो ये वैदिक संस्कृति वहाँ से यहाँ अवतरित हुई क्योंकि यहाँ के लोग दैवी वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं। And then if they take advantage of all of that and they become pure devotees and premi bhaktas and they become empowered, then they can go and they can share that information and consciousness and experience with other people in other parts of the world.
और जब वो इसका अभ्यास करके स्वयं को शुद्ध भक्त बना लेने के बाद, सशक्तिकरण पाने के बाद बाहर जाकर दूसरे लोगों को भी मदद कर पाते हैं, शुद्ध That's भक्त how बने। it's going to be spread. इसी तरीके से ये प्रचार होगा। It even says Jesus Christ went to India. यहाँ तक ये भी कहा गया है कि ईसा मसीह And Prabhupada said, if you really want spiritual knowledge and spiritual truth, you have to go to India. बात ने कहा है कि अगर आप असल में आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं, सत्य जानना चाहते हैं, तो आपको भारत आना चाहिए। सभी को ये बात पता है। But what was that for one of our friends, one of our devotees from Latvia, he's from India, and I said, what are you doing in Latvia, you know? हमारा एक भक्त है जो लातविया में है, असल में वो भारत से था। हमने उनको पूछा आप लातविया में क्या कर रहे And he said, I'm just trying to find out who was the creator. हैं? मैं ये पता लगाने आया हूँ कि सृष्टिकर्ता कौन है। So he leaves India भारत को नहीं छोड़ा, to go to Latvia लातविया में जाके to try to figure out who is the creator. ये पता लगाने के लिए कि सृष्टिकर्ता कौन है, भगवान कौन है। You're going to ask the Latvian people who is God? लातवियन लोगों को आप ये पूछें कि भगवान कौन है? I mean, unless they get Prabhupada's mercy, they become Vaishnavas, okay? But, you know, you could have got that in India. You don't have to go to the Baltic states to find out who's the original creator of the world, you know? अगर प्रभुपाद की कृपा मिली है वहाँ लोगों को और वो वैष्णव बने हैं तो आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको भारत छोड़कर बाल्टिक राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है जाने के लिए भगवान। And then I was asking him, I said, you didn't come here for that. फिर मैंने उनसे पूछा कि आप असल में ये जानने के लिए आने And then he said, yeah, that's true. ये बिल्कुल सच बात है। I'm just taking a break. मैं बस थोड़ा समय He निकाला। admitted, he said, he's so simple, he's like, I'm just taking a break. I'm just having a good time seeing what else is happening outside of India. मैं बस थोड़ा समय निकालने आया हूँ देखने के लिए भारत के बाहर क्या क्या हो रहा है। So I said, why are you saying you came all the way here to understand who's the creator, who is God? You know? Anyway. Like, it was so simple, he got God. He's like, okay, I didn't really come for that purpose. But I'm going back to India. I'm going back to India. या भारत छोड़ को यहाँ पे आए हैं भगवान के बारे में जानने के लिए, सृष्टिकर्ता के बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने कहा असल में मैं ये जानने के लिए नहीं आया हूँ। तो उन्होंने वो थोड़े सरल थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा मैं भारत वापस जाऊँगा। Why are you feeling so guilty? आपको इतना I'm going back to India, I promise. You know? उनको इतना बुरा क्यों लगता है? उन्होंने कहा मैं भारत वापस जाऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। Why do you have to tell me? मुझे क्यों बताना पड़ रहा है? You feel guilty about something? Anything? आपको किसी बात का बुरा लग रहा है? I'm going back to India. मैं भारत वापस It's जाऊँगा। not forever. I just wanted to see what's happening. मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया, बस देखने के लिए आया कि यहाँ क्या हो रहा है। So, oh, you had a question, right? तो आपका एक प्रश्न हो। I like to change my question now. What? I like to change my question. I was going to ask something else, but now you posed another interesting topic, so I would add a question there. He's changing his question from his original question. That's good. He's upgrading his question based on the, you know, the new information, you know? प्रश्न को थोड़ा और ऊपर उठा रहे हैं जो That's progress, you know? तो ये उन प्रगति हो रही है। The questions should get better as the information gets better, right? तो प्रश्न और बेहतर होने चाहिए जैसे आपको बेहतर जानकारी मिलती जा रही है। Let's see your upgraded question. चलिए देखते हैं आपका बढ़ा हुआ प्रश्न कैसा है। I want to know then who's the Jiva and why Prabhupada is saying back home, back to Godhead. He started this magazine. Because that's where we're meant to go back, to the seed-giving Father's house. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि जीवा का असल आपत्ति स्थान कहाँ है और हमें क्यों कहा गया है कि हम वापस जाएं? उन्होंने कहा वो असल हमारा घर है, हमें इसलिए वापस जाना है। It's just like somebody, right, you see in the material world, somebody, some parent, they give the child for adoption. Right? Because they can't afford the baby, take care of the baby or something, they leave at the hospital or they give to somebody else, some adoption agency, right? तो जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने किसी देखभाल करने वाले कंपनी को या किसी बाहर जगह पर उनको भेज दिया उस बच्चे को। And then even they have some adopted parents, and the parents have love and affection for them, and educate them, and take care of them, and they appreciate it, and they're grateful, and they love them. But they're always saying, but who's really
my mother and my father. तो जैसे उनको Even the end of their life, their whole life, they're looking for their mother and their father. They can't even kind of live their life until they understand who is their mother and father, where are they really coming from. Even if they appreciate and grateful for every other thing, there's one desire, they cannot give up that desire. तो अगर इस तरह से गोद लिया जाता है बच्चों को, तो उनके माता पिता उनको बहुत प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इतना सब करने के बावजूद भी वो उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर पूरे जीवन भर ये इच्छा जानने की रहती है कि मेरे असल माता पिता कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ। ये इच्छा पूरे जीवन भर वो रखते हैं। So it's an analogy, material, right? तो ये एक तरह का उदाहरण है जो But it just means that the soul of soul is meant to finally be with Krishna. तो ये उदाहरण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि असल में हमारी आत्मा कृष्ण के साथ जाने की In any other place, any other distraction, any other position, you're always, it's not the final resting place, it's not the final destination until you go back to Krishna. और इसके अलावा कोई भी अन्य स्थान, कोई भी अलग जगह जो आपको भटका रही हो, कृष्ण के अलावा आपको कभी भी संतुष्टि नहीं दे पाएगी। Because ultimately, Krishna is the giving father of every living entity. क्योंकि अंततः कृष्ण सभी जीवों के बीज प्रदाता पिता है। What position or condition or place that soul is arranged, and that's Krishna's arrangement. और जो व्यवस्था, जो स्थिति उस आत्मा के लिए बनाई जाएगी वो कृष्ण निर्धारित करेगा। And it says in Chaitanya Charitamrita, some are eternally liberated soul and some are eternally conditioned souls. और चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि कुछ लोग नित्य सिद्ध हैं और कुछ लोग नित्य पद हैं। But those eternally conditioned souls who have no real qualification are now being offered by Sri Chaitanya Mahaprabhu's Premanam Sankirtan movement to go from no sukriti, no qualification, to the highest planet, to Krishna Loka, Golok, Vrindavan, not even to other unlimited Vaikuntha planets, the highest planet. नित्य बद्ध जीवों को ये मौका दिया जा रहा है महाप्रभु के आंदोलन के माध्यम से इन लोगों को जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, कोई स्वीकृति नहीं है, इनको गोलोक वृंदावन, यहाँ तक कि असंख्य वैकुंठ लोगों को भी छोड़कर सीधे गोलोक वृंदावन जाने का। That's what Prabhupada says, somehow or other we have fallen here in this material. इसको प्रभुपाद ने कहा किसी तरीके से हमारा यहाँ पता चल Don't bother your head. Try to figure out how to get out of this situation. ये पता लगाने का प्रयास कीजिए कैसे आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। I heard one person, he said nicely, he said it's like you're in a battle and you get shot with an arrow, right? And you're laying on the ground and you have like an arrow in your chest and you're like, who shot this arrow, तो एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मान लीजिए आप युद्ध में हैं और एक तीर जो है आपकी छाती को चीरती हुई जा चुकी है, तो छाती को चीर चुके तो आप ये नहीं कहेंगे, उस पर सोचेंगे कि ये तीर किसने चलाया। Is that really the question? Usually we try to get the arrow out, try to stay alive, try to survive, right? तो ये प्रश्न पूछने का सही समय नहीं। Who originally shot this arrow? तीर को किसी तरह बाहर निकाले, खुद को बचाने का प्रयास किया जाए, ये पता लगाने की बजाय कि इस तीर को चलाया किसने। It's not like the immediate problem, you know what I mean? वो उतना जल्दी वो अभी की समस्या नहीं है। Alright? ठीक है। Hare Krishna. In conclusion, Prabhupada said many things in different times, places, circumstances, candidates, depending on people's consciousness, depending on what they can understand, and in encouraging ways, inspiring ways. But in conclusion, Prabhupada said, nobody falls from Vaikuntha. प्रभुपाद ने अलग-अलग समय में अलग-अलग बातें बताई, अलग-अलग निर्देश दिए हैं, और लेकिन अंत में श्री प्रभुपाद ने कहा कि निष्कर्ष में कोई भी वैकुंठ से नहीं गिरता। So if someone says, can you go to the store and get me some apples? तो जैसे अगर आपको कोई कहे कि आप बाजार जाकर कुछ सेब खरीद कर ला सकते And then हैं, I call you back and say, no, don't get apples, get oranges. और फिर वो फलों में कहे नहीं आप सेब नहीं खरीद Oh, actually, no, don't get that, get the bananas. नहीं आप संतरे नहीं केले खरीद कर लाओ। So what are you going to get? फिर क्या खरीद कर लाएंगे? The last thing. सबसे आखिरी ऐसा है नहीं। So in conclusion, तो निष्कर्ष में you accept the last instruction. तो सबसे आखिरी निर्देश आप स्वीकार करें। Because it's taking everything else and it's saying, really, the conclusion of all of it is, nobody Prabhupada says falls from Vaikuntha. क्योंकि बहुत सारी बातें एक साथ उसी में समा ली, प्रभुपाद ने निष्कर्ष में कह दिया कि किसी का भी पतन वैकुंठ से नहीं होता।
So that's authoritative statement from somebody who's from that place. तो ये एक आधिकारिक कथन है उस वैसे व्यक्ति के माध्यम से जो उस जगह से And then you can look at it in all the ways that Prabhupada explained, that there's no modes of material nature in Vaikuntha. और दूसरे तरीके से प्रभुपाद ने कई जगह इसका विवरण दिया है कि There's no Maya there. आध्यात्मिक जगत में प्रकृति के गुण नहीं है, माया There's no नहीं है। material bodies there. वहाँ कोई भौतिक शरीर There's नहीं no है। super soul there. वहाँ परमात्मा भी नहीं है। Material body, it means super soul coming in the material body with your soul. But there, your spiritual body, तो भौतिक शरीर में परमात्मा or super soul, कृष्ण परमात्मा रूप में आत्मा के साथ आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आपके पास आध्यात्मिक शरीर होता है। so look at everything else in context. There's no sin, no sinful desire, no modes of material nature. तो बाकी सारी चीजों को आप बना कर देखिए, वहाँ पाप नहीं, पाप कर्म की इच्छा नहीं है। Everyone is in perfect happiness, in ever increasing blissful happiness and ecstasy. Where's the room for any kind of like, you know what? I didn't get enough ecstasy today. I'd rather go back down into mire and get threefold miseries and birth, death, disease, and old age. You know, I mean, come on, it makes no sense. जहाँ पे आपको पूर्ण आनंद मिल रहा हो, प्रतिदिन नित्य आनंद बढ़ता जा रहा हो, एक दिन आपको ऐसा लगे कि आज मुझे मेरा आनंद बढ़ा नहीं, तो अब मैं भौतिक जगत में आऊँगा, माया का मार खाऊँगा भाई। Use some common sense. तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए, कोई सामान्य अपना ज्ञान इस्तेमाल कीजिए। So these are imposters. तो ये सब ढोंगी है। They're imposters. ये सब ढोंगी है। They're posing like they're from that place. तो ये दिखावा कर रहे हैं कि वो इस जगह से। Just like sometimes they try to pose like they're Krishna, or then there was some guy who had like fake arms, like he had 4 arms or something. जैसे कुछ लोग होते हैं दिखावा करने का प्रयास करते हैं, वो कृष्ण है, दो नकली हाथ लगा कर आते हैं, 4 हाथ दिखाने के लिए। They're always like trying to pose like God, Bhagavan, right? This is because of enviousness. तो सब लोग दिखावा करना चाहते हैं कि वो भगवान है, द्वेष की वजह से। So if you're envious of God, then you're also envious of God's eternal servants as well. अगर आप भगवान के प्रति द्वेष करते हैं, तो भगवान के नित्य पार्षदों के प्रति भी आपके अंदर द्वेष होगा। And their eternal servants, they come with Mahaprabhu, they come with Krishna, they descend from that place. They're descending from the moon planet and the sun planet. Are you envious of those people and their bodies also? तो ये लोग नित्य पार्षद हैं जो कृष्ण महाप्रभु उनके साथ में यहाँ पर आते हैं और सूर्य लोग चंद्र लोग वहाँ से आते हैं, तो उन व्यक्ति के प्रति भी हमारे अंदर द्वेष रहेगी। Because you can't have a sun body. क्योंकि आपको एक सूर्य के जैसा आपके पास शरीर है। And then you got to bring everything down to your conception of the moon. और फिर आप सब कुछ आपके मन की विचारधारा के ऊपर, चांद के ऊपर जो विचारधारा है वो लेकर आते हैं सबके सामने। And then if you say that what is the special quality and characteristic of Nitya Siddha, the eternal associate of the Lord, they say, well, we're all Nitya Siddhas, we're all from there. और जब पूछा जाता है कि वो विशेष गुण स्वभाव व्यवहार क्या होता है नित्य सिद्ध को, कहते हैं नहीं, हम सभी नित्य सिद्ध हैं। So if you get everybody to believe that, right, then if I pose like I'm a Brijavasi, then how will you know, right? Then you say, well, he's from there, we're all from there, but that makes sense that he's just more advanced, so he's already like a Brijavasi, right? तो अगर लोगों को आप ये विश्वास दिला पाते हैं हम सभी नित्य सिद्ध हैं, और अगर कोई ब्रिजवासी की तरह व्यवहार करने लगे, हवा करने लगे, तो हमें ऐसा हो सकता है, लगने भी लगे कि हो सकता है ये हमसे ज्यादा उन्नत हो और ब्रिजवासी के स्तर पे आ चुका है। Think about it. सोचिए इसके बारे में। Right? And then you avoid all of the scientific presentation from Srila Prabhupada's books and teachings and all the previous acharyas, and you just try to grab, you know, some materialistic translation of the rasa tattvas and all of the, you know, the sandhagas, and now all of a sudden if you have some gyan, you can try to pose your gyan, act like a Brijavasi, and back it up by saying you're eternal associate of Radha Krishna because you're also Nitya Siddha. It's all part of the scam. It's all part of the chita. और साथ ही साथ श्री प्रभुपाद की जो वैज्ञानिक विश्लेषण है और गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं उसको त्याग करके वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ब्रिजवासी के स्तर पे है और अपना ज्ञान रूप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भी नित्य सिद्ध है। So if you want to just
If you want to be politically correct and get all the benefits within the institution, right, then you cannot speak the truth. तो अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, संस्था के रूप में सही बातें करना चाहते हैं, तो आप सत्य बातें नहीं बोल पाएंगे। That means you're compromised. इसका मतलब आपको समझौता करना होगा। Knowingly or unknowingly. जान कर या अनजान आपको समझौता करना होगा। Because to speak the truth means everyone will become your enemy. क्योंकि सत्य जब आप बोलेंगे तो सारे लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। In fact, Thakur says they'll all get together, even they hate each other, but they'll get together just to oppose you. और श्री भक्ति ठाकुर बताते हैं कि सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। हो सकता है वो लोग आपस में नफरत करते हो, लेकिन आपका विरोध करने के लिए सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। So these Maharaj posing like they're like Brijabasis and gopis in separation, they really believe that. तो ये महाराज जो दिखावा कर रहे हैं कि वो गोपी हैं, ब्रजवासी हैं और गोपी विरह के भाव में हैं और ये असल में उस पर विश्वास करते हैं। They're believing their own lies. तो वो अपने ही झूठ पे विश्वास करते हैं। And because everyone around them is also in this illusion, in this lie, they're all perpetuating each other's lie. और उनके आसपास के लोग इस तरह के झूठ के मोह में हैं, तो वो इसी झूठ को आगे बढ़ावा देते हैं। Even when they talk about each other, they say, "Oh yes, Maharaj, he's a cowherd boy, he's a Manjari, separation, Brajabasi." This is how they talk about each other. और वो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, ऐसी बात करते हैं, ये महाराज जो है मंजरी हैं, ये गोपी विरह के भाव में हैं, ब्रजवासी हैं। It's like a big joke. It's like everybody knows he's Brajabasi. इससे कोई बहुत बड़ा मजाक है कि सभी को पता है कि वो There's a lot of brainwashing going on. तो बहुत सारी ब्रेनवॉशिंग हो रही है। That's why I told them you need a guru. और इसलिए मैं कहता हूँ आपको गुरु की जरूरत है। We had one devotee, she was telling that yes, the Lord Jagannath came in my dream last night and he was telling me like all of these different things, तो हमारे भी एक बात है जो बताते हैं कि जगन्नाथ मेरे सपने में आए तो मुझे ये अलग चीजें बताई गई। And then I just said, well, just keep chanting, that will leave you. आप जब करते रहिए धीरे-धीरे ये सब समझ जाएंगे। Gradually you'll get to the reality. धीरे-धीरे तो ऐसे सच्चाई तक आप पहुंच जाओगे। So the pride and sentimentality makes you believe that you're on that level. तो दंभ और भावुकता आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप इस स्तर में हैं। It's just like Krishna says, if you want to worship the demigods, I'll give you intelligence and faith how and why you should worship the demigods. जैसे कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, अगर आप देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं तो मैं आपको श्रद्धा दूंगा, विश्वास दूंगा क्यों आपको उन देवी देवताओं की। So you see these people who are seriously worshiping the demigods, right? They're convinced, they have faith. They're like completely, they understand all the rules and regulations, how to do that seva and how to do that puja and how to do that sacrifice and how to offer those prayers and mantras and tantras, right? They're convinced because Krishna is cheering them, giving them lunch. बहुत गंभीरता से देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं तो उनको पूरा आश्वस्ति विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, सारे तंत्र मंत्र सारे विधि विधान सारे यज्ञ उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होते हैं। Because Krishna is saying those people who worshiping the demigods, he said in the Bhagavad Gita, they're less intelligent, they're not very intelligent people. कृष्ण ने बताया भगवद गीता में जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं ये कम बुद्धिमान लोग So they're cheating. वो लोग ठग रहे हैं। So I'm giving them intelligence and faith how they can cheat. मैं उनको बुद्धि दे रहा हूँ, श्रद्धा दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से वो ठगाई जा सकते हैं। Dhruva Maharaj, he had material desires. ध्रुव महाराज के अंदर भी भौतिक इच्छाएं थी। And somehow or other, he went to the forest, he met Narada Muni. और किसी तरह से जब वो जंगल गए तो वो नारद मुनि Narada से Muni मिले। is pure Vaishnava, pure devotee. तो नारद मुनि शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त है। So he said, okay, just follow what I'm telling you, and this will gradually fulfill all of your desires. But he was thinking, I'm going to trick him and give him Krishna Bhakti. कि मैं आपको ये सारी चीजें नियम बताऊंगा, आप उसको पालन कीजिए, लेकिन असल में वो उनको ठगने का प्रयास करते हैं कि उनको कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं। That's mercy. और ये कृपा है। So just like Prabhupada said, to just come and chant and dance and take prasada and go back to Godhead. जैसे भगवान ने सबको कहा, आइए कीर्तन कीजिए, नाचिए, प्रसाद दीजिए और भगवत धाम वापस जाइए। And what's the problem?
And then Prabhupada like was chuckling, little laughing, and saying, "You see, I cheated you. Because if I really told you what the price is, none of you would have joined." So he just makes it so easy. Dance, take the shot, and go back to God. Any other questions? When I was there in ISKCON temple, I was listening some lectures from other devotees. From who? Dr. Keshavanand, From who? Dr. Keshavanand. the disciple of Bhakti Vikas Swami Maharaj. He was listening to some lectures of a disciple of Bhakti Vikas Maharaj in ISKCON temple. Did you like his presentation? Wasn't this the guy who just got thrown out? No, that's, Oh, that's the other Maharaj. That's the one who speaks Hindi. Yeah, that. Yeah. So, He's acting like a sadhu and very renounced. Austere. And tyagi. He does a nice. He should get an Oscar for that. Because if you just look at him, it looks very renounced and very like, you know, austere and very scholarly, right? I remember I watched one video about him because I heard something about him. I said, let me see for myself. So I kept open mind, open heart. If he's really advanced, that would be very good. I can get his association. I pray to Guru and Krishna. Okay, let's see what does this person tell us. And he starts talking about all the politics in ISKCON. Just complete politics discussion. No philosophy, no tattva. It's just it's like another political party complaining about the other political party. Right, so who's not in power, they're called like opposition. So he's like the opposition party and he's just saying what politically is wrong. Nothing philosophical. Nothing discussing about the, you know, Siddhanta or about not presenting the tattvas properly. And then I had one personal exchange with him, and he came to Bhubaneswar. And he was leading a kirtan in one big pandal. So then I went to join in the kirtan in the pandal. And I was trying to like dance with all of the devotees, and he became completely disturbed and angry, you know, and just ignored me, you know. और मैं उसके वहाँ पे सारे भक्तों के साथ मैं भी मिलकर नाचने लगा तो मुझे देखकर कोई गुस्सा होने लगे और डिस्टर्ब So I was thinking that's a very strange reaction. तो मुझे लगा ये बहुत ही विचित्र प्रतिक्रिया देते हैं. So anyway, that was my. All they have to do is express what they know, what they're thinking, what is their understanding. You can understand everything about that person. If you know the Siddhanta and you know the tattvas and you know and have experience of what is the real thing, right? Then you have something you can compare and measure and understand it from, based on your sources. जो जिस तरह के से लोग अपने विचारों को जो भी वो चाहते हैं उसको व्यक्त कर रहे हैं, अगर आपको सिद्धांत पता है, तब तो पता है, तब आप तुलना कर पाएंगे कि वो बातें सत्य है, सिद्धांत की तरह सही है या नहीं. And you know, their disciples hate me, and I'm a demon, and I'm offended to the Vaishnavas, and you know, they can say whatever they want. I can show you the video of what he's talking about. You tell me if there's anything spiritual about that. It's like sometimes you see like in Indian politics, like some Babaji, some Baba, you know, he comes and he looks like he's really renounced, and, right? And he comes with the saffron on, and he has a beard, or
right? And then somehow he's in the parliament, he's in the government, right? So, you know, everyone's treating him like, oh, you know, he's a religious guy, and, you know, he's a Babaji, and, you know, but he's also trying to help, right? And then he's just talking, he's just like another politician. तो भारत में आप देखेंगे कोई ऐसे साधु जैसे या तपस्वी जैसे दिखने वाले के बाबा जी जिसकी कोई दाढ़ी बड़ी हो गेरुआ वस्त्र पहन के, लेकिन जब वो बातें करना शुरू करता है तो पूरी तरह से बस एक राजनीतिक रूप में बस, लेकिन लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वो धार्मिक जैसा दिख रहा है, Nothing spiritual about it. लेकिन कुछ भी उनके अंदर आध्यात्मिक बातें नहीं आती हैं। But he's got one interesting kind of, how do you say, some way that he's capturing people. लेकिन उनके पास एक बहुत ही विशेष तरीका है जिसके माध्यम से लोगों को पकड़ते हैं। Very strict, externally very strict. तो बाहर से बहुत ही सख्त है, कड़े हैं। So everything, if you just look at everything really strictly externally based on the sadhana and the program, right? He's just focusing on that part. So he's externally very strict and austere, but not Siddhanta, not based on tattva, not based on philosophy, just the externals. So it's really totally insufficient. You can see it's just another ploy to get those people who are fanatical and who want to just follow externally in this kind of mechanical and austere way, but there's nothing really spiritual about it. तो बाहर से वो केवल बाहरी तरीके से बहुत बड़े तपस्वी, सख्त नियमों का पालन करने वाले, बहुत सख्त साधना का पालन करने वाले लोग दिखते हैं, जो कि असल में सख्त नहीं है, सिद्धांत में, तत्वों में और दर्शन में। और जो लोग पूरी तरह से फैनेटिक होकर उनका पालन करना चाहते हैं, जो बाहरी रूप से केवल सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं, वो बस उसका पालन करते हैं। It's external. पूरी तरह से बाहरी रूप से। We're not interested in the externals. तो हम बाहरी चीजों में हमें कोई रुचि नहीं है। Spiritual life is internal. आध्यात्मिक जीवन भीतरी होता है। So what was your question? Actually, I was going to talk about the disciple of that one. Right? So a deviation from the deviation. He's carrying on in that parampara, the deviation of the deviation. So brainwashed from the brainwashed. Right? So someone's brainwashed and he brainwashed you. So it's like second-hand brainwashing. At least go to first-class brainwashing. Why don't you go to second-class brainwashing? Twice as contaminated. I should be going to hell, right? I mean, so why am I peaceful and happy? Why are you guys all laughing? We're all going to hell, man. Why are you happy hearing all of this? Shouldn't you be like scared and like running out of the room? Why are you not feeling fear and anxiety? It's really funny. It's like you're almost like, you know, is it, can we laugh? Is it alright to laugh about these things? So much manipulation, so much brainwashing. Don't think that way. Don't speak about it. Right? You're gonna go to hell. You're gonna burn in hell. You're an offender to the Vaishnava. And then my Gurudev will say, well, let's define what is Vaishnava. Let's have a nice discussion about what is a Vaishnava. We're assuming an awful lot, isn't it? You're Nitya Siddha, you're Pujabhasi, you're pure devotee, you're the ultimate managing authority, you've got money, you've got power, control, followers. Wow. Must be spiritual.
व्यवस्थापक अधिकारी अवश्य आपको बात बताते हैं। So what does he say? वो क्या कहते हैं? Let's dissect this nonsense. This is fun, actually. Isn't it fun? Yes. Why are you having so much fun? Actually, when I was in ISKCON, I was facing a guru issue at that time. And pseudo is gone. Yeah, pseudo ISKCON. So I was facing this guru issue, no nourishment, nothing spiritual. Issue what? No spirituality and no nourishment, spiritual nourishment. Because you're a fallen soul, man. The problem is you. You don't understand how exalted that person is. It's just an operandi. It's just a troublemaker. You're envious. You can't understand it because you're envious. You're gonna go to get out from here. Sound familiar? I've been there a few times, you know. Even the disciples were doing politics around me. Even the disciples, they were my god brothers, they were doing politics around me. They're They were brainwashed. saying that I don't have faith on my guru. You don't have what? Faith on my guru. How can you? मेरे गुरु भाई मेरे साथ राजनीति करने लगे थे। वो कह रहे थे मेरे गुरु के ऊपर मेरे को श्रद्धा नहीं है, तो गुरुदेव कह रहे थे कैसे होगा श्रद्धा? That means you have a brain. इसका मतलब आपके पास दिमाग है। You're intelligent. Get some mercy from Krishna. आपको बस कृष्ण की कृपा मिली। Krishna Subhaso saying, don't do it, man. It's not real. You're going to get sucked into the situation. But how can you tell someone to accept the guru without ever explaining to them what is Guru Tattva? कैसे आप किसी को गुरु स्वीकार करने के लिए कह सकते हैं बिना गुरु तत्व के बारे में सिखाए? Shouldn't it be that the first thing you do is train them to understand what is Guru Tattva, what is the process of understanding how to, who is a guru, who's authorized guru, who you should accept as guru, how do you get intelligence and faith to accept that? That's all described in Prabhupada's books and teachings. Why don't they ever talk about that? सबसे पहली शिक्षा क्या ऐसी नहीं होनी चाहिए कि गुरु तत्व क्या है, क्या वो योजना है जिसके माध्यम से आप गुरु को जान सकते हैं? तो ये सारे तत्व सबसे पहले सिखाने की जरूरत है। You're not smart enough. We'll tell you who's who. आप लोग पर्याप्त बुद्धि नहीं है, हम आपको बताएंगे कौन We'll है। save you the trouble, and that way you won't make any mistake. हम आपको परेशानी कम करेंगे और इस तरीके से आप गलती की नहीं करेंगे। And then they say, okay, this is in this temple, this is the guru, this guy or that guy. तो कहते हैं इस मंदिर में ये या ये दोनों में से एक है। So I was watching that lot of politics is going on in that temple, and the guru is not speaking boldly about those things. Because he's a politician. So I lost. Right, if the politician is part of the parliament, right, and they're all cheating and scamming, right? How can a politician tell them what these other people are doing? अगर कोई They're also doing the same thing. They don't talk about that then. सभी लोग Otherwise they'll get kicked out, they won't get their cut. राजनीति करते हैं तो वो सबको बाहर सबका सच बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि फिर उनका प्रतिशत परसेंटेज घट जाएगा। So then I thought that this is the what is the root problem? I was thinking about that. Then I got the statement by Srila Prabhupada that the rubber stamping is not good. Rubber stamping of gurus by ecclesiastical body is not good. But then I recognized that actually this is going on. Prabhupada, he never said rubber stamping of gurus is not good. Okay? Because he can't even imagine that someone would try to come up with that scam. Because he said this is what is the process, right? This is what it is.
तो प्रभुपाद ने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग इस तरह के विमुखता लेकर आएंगे, रबर स्टैम्प करके गुरु बनाया जाएगा। वो बस इसी तरीके से बनाने का प्रयास करते थे, ये असल प्रक्रिया है। Then And then what happened was when they all said who's the gurus, right? Then the gurus all started falling down. फिर क्या हुआ जब उन्होंने कहा कि ये सभी लोग गुरु हैं, तो फिर गुरुओं का पतन होना शुरू हुआ। And then they stopped approving the guru and giving rubber stamp because their percentages of who was surviving as guru wasn't very good. और फिर उन्होंने ये रबर स्टैम्प देने की प्रक्रिया की कौन है गुरु, ये देना, ये ऊपर विचार करना शुरू किया कि जितने प्रतिशत लोग गुरु बन रहे थे उनमें ज्यादातर लोग क्यों बन रहे। So they came up with another concoction. They said, okay, we won't approve them, but we'll just have a, what is it called? NOC, no objection certificate. Oh yeah, it's a no objection. I'm not approving, but I'm just not, I'm not objecting. फिर उन्होंने दूसरी पद्धति I'm लेकर not आए, voting for him, but I'm not objecting. उनके लिए मतदान नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। What is this? Are we that stupid? ठीक है, कि हम इतने बेवकूफ लगते हैं। Do we not know it? Okay, I'm not approving him, but I'm not objecting him. हमें पता नहीं चल रहा है, आप उसको मतदान नहीं दे रहे हैं लेकिन उसके खिलाफ भी नहीं। And then you have 50 guys saying, okay, I have no objection. और 50 लोग ये कह रहे हैं कि हम इनका विरोध नहीं कर रहे हैं। Is that not a vote? तो ये मतदान ही है। So this is all word jugglery. तो ये बस बातों को They're changing definitions. परिभाषा को बदला कर रहे हैं। Right, they're changing the words in the books. किताबों के अंदर शब्दों को बदला कर Quoting रहे हैं। half the sentence, half the quotes. आधे वाक्य, आधे कथनों को पेश किया जा रहा है। They're leaving out Prabhupada's actual instructions on the matter. और प्रभुपाद के असल निर्देश जो उन्होंने उस विषय के लिए थे उसको छोड़ा जा रहा है। Then I saw that basically all the gurus are being appointed by GBC itself. So I lost. No, Maya. मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों को जीपीसी ने नियुक्त किया है, जो बता रहे हैं कि माया ने नियुक्त किया। It's Maya. सब माया, Maya is about it. माया। It's either Krishna or Maya. या तो कृष्ण करते हैं या माया करते हैं। Right? So Prabhupada said that if Krishna selects you, wants you, then he'll give instruction through bona fide guru and parampara. Right? वो बताते हैं अगर आप कृष्ण आपको चाहते हैं, आपसे सेवा करना चाहते हैं, तो कृष्ण Authorization ultimately comes from Krishna and previous acharya and Prabhupada. ये अधिकार कृष्ण से और हमारी आचार्य जो परंपरा में है उनसे आता है। So my spiritual master, he was told and instructed by Srila Prabhupada मेरे आध्यात्मिक गुरु को श्रील प्रभुपाद ने बताया और उनको आदेश to दिया make his own man just like he did. खुद के लोगों को तैयार करने के लिए जैसा प्रभुपाद ने किया। And Srila Govinda Swami gave me that same instruction. श्रील गोविंद जी महाराज ने मुझे भी वही My निर्देश Guru said, just like Prabhupada told me, Murali, I'm telling you same thing. दिया। श्रील गोविंद जी महाराज ने कहा जैसे प्रभुपाद ने मुझे कहा मैं तुम्हें कह रहा हूँ। So Prabhupada said, one must receive order and instruction from previous acharya in order to become, assume the service as the guru. प्रभुपाद बताते हैं किसी को अवश्य अधिकार और सशक्तिकरण प्राप्त करना होगा, कोई को आचार्य से गुरु बनना होगा। Even Prabhupada himself said that he was ordered and instructed by his guru. यानी प्रभुपाद ने स्वयं कहा कि उनको उनके गुरु से अधिकार और आदेश प्राप्त होगा। I have many quotes, and we'll discuss it another time. We'll get really into it, and I'll show you every single place Prabhupada explains that in order to become bona fide guru in parampara, you must receive order and instruction from previous acharya. I'll back it up with everything Prabhupada said. आप दूसरे दिन इसके बारे में बात करेंगे। प्रभुपाद ने इतने सारे कथन इस बारे में दिए हैं, किसी को गुरु बनने के लिए प्रमाणिक परंपरा में आदेश और अधिकार प्राप्त करना होता है पूर्व आचार्य से। So actually, I was thinking that whom should I associate with now? Who should what? Whom should I take guidance? Whom should I take guidance from? I was searching some personality, some guru in ISKCON. Before leaving ISKCON, I was about to switch to Ritvik system, but I had heard that Prabhupada never wanted this. So I was having that. I was knowing about Srila Gaur Govind Maharaj. I have read the book When Good Fortune Arise, Shuddh Naam Bhajan, and in association of pure devotees, in which Maharaj's departure and all those leelas are described. I was very much impressed, but because he has already left this world, so now I was thinking, whom should I take guidance from now in ISKCON?
So then I heard some lecture of Bhakti Vikas Swami Maharaj. I thought that maybe he can, that same who speaks Hindi. Oh, yes. Yeah, so I thought that maybe he can guide me. Then he has made a series of videos on guru issues on YouTube. So I heard those series, guru issues series. What is it? He listened to Bhakti Prakash Maharaj, he did a guru series, guru issues. Like the guru issues. The guru issues. There's a series of videos on He has YouTube. made recently. There's a series of There's a gurus. series on YouTube about the issues about gurus. Why doesn't he just explain Guru Tattva? उन्होंने गुरु सीरीज के ऊपर एक पूरा What's his वीडियो issue? बनाया, What's बहुत his सारा। issue that he's acting like a guru? Let's hear what is your issue. गुरु तत्व क्यों नहीं बताया? उन्होंने अपना इश्यू क्यों नहीं बताया कि क्यों वो गुरु की तरफ काम कर रहे हैं? On those videos, Talking about everyone else's issue. दूसरे लोगों के अंदर जो इश्यू वो बताया, अपना इश्यू क्यों नहीं बताया? How you became a guru, Maharaj? आप खुद कैसे गुरु बने महाराज? that was the actual What's your question. story, Maharaj? आपकी क्या कहानी है महाराज? So in that series of video, I heard that he is actually favoring the appointment of gurus by GVC. Then Because that's how he became a guru. How else is doing that? उन्होंने देखा कि गुरु इसमें बता रहे हैं एक जीबीसी जो गुरु जिसको बनने का अधिकार देते हैं वो पुराने गुरु हैं तो उन्हें बता रहे हैं क्योंकि वो खुद उस तरीके से गुरु बने इसी तरह से ही बता रहे हैं They're all bogus and deviated, but they appointed me as guru. So that's the only good thing they ever did. तो ये सारे लोग जो बोगस हैं लोग गलत लोगों को नियुक्त कर रहे हैं लेकिन एकमात्र मुझे इन्होंने सही नियुक्त किया है So that one thing you should accept as absolute, but the 99 other things, it's all Maya, तो उस एक चीज को आप सत्य मानिए और उसके अलावा जो 99% सब है They were like, oh, okay, yeah. This is the truth. ये सत्य है and then after listening that thing, I gave up that last hope also. That You got that last 1%, right? तो आपके सुनने के बाद वीडियो सुनने के बाद मैंने अपना 1% खो दिया See, what you do is just explain what is Guru Tattva according to Guru Sovereign Shastra, right? And now you know what is the measuring rod. Now you have a way to understand what is the process, what is the qualification, what is the procedure, how do you have intelligence and faith. All of that is Prabhupada discusses all of those things. तो एक ही चीज करनी है बस गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से बतानी है कि क्या योग्यता होनी चाहिए गुरु के पर आपके अंदर कैसे वो बुद्धि और श्रद्धा मिलनी चाहिए प्रमाणिक गुरु को चुनने के लिए प्रभुपाद की किताबों से सही तरीके से समझाया जाना चाहिए So who knows that, who's heard that and knows that and realizes that and can substantiate it by Guru Sovereign Shastra, Prabhupada's books and teachings and instructions, that's a guru. और जिसने इसको सुना है जिसने इसको जाना है व्यवहारिक साक्षात्कार किया है और जो लोगों को इसको वैज्ञानिक तरीके से गुरु साधु शास्त्र प्रभुपाद की किताबों और शिक्षाओं के आधार पर समझा सकता है वो है असल में गुरु Those instructions give you the means to understand who has met those instructions, who meets that criteria. तो ये सारे बने हैं आपको ये दिखाने के लिए कि किसने इन निर्देशों को सही तरीके से पालन किया है पूरा किया है और क्राइटेरिया को पूरा किया है Otherwise, how do you measure anything? वरना कैसे आप तुलना कर पाएंगे Of course, you're doing it, like in a logical way, that you just basically undermine the faith in all of these people, but at the same time, you're saying that's why you're a guru, right? So logically, it's not a very great argument, right? It's a foolish argument. तो आप तर्क देने का प्रयास कर रहे हैं कैसे क्यों ये सारे कारण की वजह से वो लोग सही नहीं है लेकिन अंत में ये भी पता चल रहा है कि आप भी उसी प्रक्रिया से नियुक्त हुए हैं Right? Can you trash everybody and say, but those are the people who made me a guru? I mean, can anyone really accept that? तो वो पूरे सभी समय में उन लोगों को गलत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं अंत में कह रहे हैं ये नहीं गलत तो मैंने मुझे गुरु नियुक्त किया है तो आप मान रहे हैं हम इसको स्वीकार करेंगे I mean, the only thing you can say is, like I said, the only good thing they could finally figure out was that I should be a guru. तो ऐसा भी Well, outside of that, there's like nothing there.
तो यही एक बात अच्छी से कहना चाहते थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया सब कुछ गलत किया सिवाय एक चीज की कि मुझे गुरु बना, इसके अलावा उन्होंने सारी चीजें गलत की। That is exactly. He is almost against GBC, but only this point he accepts that rubber stamping is good. कि GBC ने सारी चीजें गलत की, बस एक चीज है मैं मुझे उन्होंने सही होना किया। That's why I said, it's another political party. इसलिए मैं कहता हूँ ये एक और राजनीतिक दल है। It's just the opposition party. He's not in power. He's the opposition. वो विरोधी दल में है, वो अभी सत्ता में नहीं है, तो उसके विरोधी दल में है। So all you can do is just keep criticizing whoever's in the power, right? तो विरोधी दल हमेशा ये करता है, जो सत्ता में रहता है उसकी हमेशा बुराई करता है। But let's just say you get in power. लेकिन क्या होगा, मान लेते हैं चलिए आप जब सत्ता में आते हैं, Then what is your policy? What are your agendas? What do you understand? What are you going to implement? तो आपकी क्या पॉलिसी, आपकी क्या समझ है, आप क्या लोगों के बीच में लागू करवाना चाहते हैं? My question is that shouldn't this GBC be under Guru? Why GBC should be above Guru? GBC is a managerial body, administrative body, like a Kshatriya body. So it should be This under is Guru. blasphemy. आप जो है अपराध कर रहे हैं। They are the ultimate managing authority. वो जो है सबसे परम व्यवस्थापक अधिकारी। They are the combined Guru Tattva. वो एक महिला जुला गुरु तत्व है। Right? So they don't have an individual brand, but together, when they take a vote, man, that vote is absolute. तो उनका एक दिमाग नहीं है, लेकिन एक साथ मिलने के बाद जब वो दिमाग लगाते हैं और जब वो मतदान करते हैं तो वो परम सत्य होता है। Right? So if it's like, 51 for, 49 against, that's like the absolute truth. तो जैसे 51 लोग एक तरफ हैं और 49 लोग उसके विरोध में हैं और उसको परम सत्य के रूप में चुनना चाहते Does हैं। that sound absolute to you? क्या ये कोई परम सत्य आपको लगता है किसी तरीके से? Absolute means 100%, right? परम सत्य मतलब वो 100% सही We हो। won the vote. हमने वोट 51, 49. Now we just have to hang in the power so we can always win the vote, अब हमें बस इस तरह सत्ता में बने रहना होगा ताकि हम हमेशा मतदान कर Otherwise, everything's in jeopardy, man. सकें। सब कुछ खतरे में है। They'll take away my zones, my temples, मेरा money. मेरा जोन, मेरा मंदिर, मेरा पैसा लिया जा सकता है। That's power politics. ये है सत्ता की राजनीति। So this is just supposed to be a managerial administrative function. As Prabhupada said, they should just be grihastas who are just living there and let them manage the logistics of the paperwork and the administration of the, how do you say, decentralized temples. तो प्रभुपाद ने ये व्यवस्था बनाई थी कि जो गृहस्थ हैं वो इस व्यवस्था को संभालने का कार्य करेंगे, इन सारे कागजाती कार्य और मंदिर को संभालना इस तरह का कार्य हम लोग करेंगे। And then the sannyasis, the preachers, those who qualify, those who are empowered, those who are pure, they're not involved in power politics. They're just hearing and chanting and talking about the, Siddhanta and establishing, the spiritual truth. So it's a spiritual authority. और जो सन्यासी हैं, जो प्रचारक हैं, जिनकी शिक्षा शुद्ध है, जो राजनीति में ज़्यादा लगे नहीं हैं, और वो घूम कर इस तरह से प्रचार करेंगे और परम सत्य को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। So because they can't establish their spiritual authority, they have to just take this managerial authority and somehow or other make that absolute and spiritual. तो वो आध्यात्मिक अधिकार को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने व्यवस्थापक अधिकार को स्थापित करके उसको ही परम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। Right? So you're not from Goloka Vrindavan, you're envious of those people who are. So we'll just say we were all in Goloka Vrindavan and we all fell, you see. तो आप गोलोक वृंदावन से नहीं हैं और गोलोक वृंदावन के वाले व्यक्तियों से आप द्वेष करते हैं, तो हम बस अंत में यही कह देंगे कि हम सभी गोलोक वृंदावन से आए हैं और हम वहाँ से गिरे हैं। So you just have to adjust everything in such a way that you come out, make sure you win the votes, you know what I mean? चीजों को इस तरीके से व्यवस्थित करना होगा कि अंत में जो है आप मतदान जीत सकें।
So now basically what is going You on? need the bridge preaching program, man. आपको ब्रिज प्रीचिंग प्रोग्राम में जोड़ना होगा You're not advanced enough to chant Hare Krishna. You have to do pranayam and hatha yoga. You need a psychologist. आप इसलिए उन्नत नहीं है हरे कृष्णा नाम लेने के लिए आपको प्राणायाम साइकोलॉजी करना चाहिए And you have to find out, who you were in your last life. और आपको ये समझना होगा कि आपके पिछले जन्म में आप क्या थे And you need some conflict resolution therapy. और मतभेदों को कैसे सुलझाया जा सकता है इसका आपको उपचार लेना होगा You need some coaching. आपको कुछ कोचिंग लेनी होगी You're not advanced enough. If you were a hippie, you'd be advanced enough. अगर आप हिप्पी होते तो आप थोड़े उन्नत होते But since you're not a glorious hippie, that's another one, right? The hippies are like these fabulous, personalities, right? They're like the lowest of the low. तो वैसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हिप्पी जो है कोई महान लोग थे तो सबसे पतित सबसे गिरे हुए लोग थे We grew up in that place. We were the generation after the hippies. हम उसी जगह में पले बड़े थे हिप्पियों के बाद की जो पीढ़ी है वो हम लोग People were filthy, disgusting. ये लोग पूरी तरह से गंदे थे And they're making it like all the hippies, they're making it like it's some mystical, spiritual paradise, And one said is we fell from Golok Vrindavan and we became hippies. लेकिन ये हिप्पी ऐसा दिखाने का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जादुई करिश्माई लोग हैं ये गोलोक वृंदावन से गिरे और यहाँ अचानक से आकर हिप्पी बन गए You're in Golok Vrindavan and now you haven't taken a bath in 6 months, you know what I mean? आप गोलोक वृंदावन से गिरे और यहाँ गिरने के बाद आप 6 महीने में एक बार नहाते तक नहीं हैं Because, the government told us we have to take a bath, so out of, rebelliousness, we're not bathing, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हमें नहाना चाहिए लेकिन उनके विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम अपना हाथ We'll show these authorities. हम दिखाएंगे इन अधिकारियों को And then you're in the store or shopping with your mother or something, and it's like this really bad smell, and you're looking around, and there's like these hippies walking around, and they're disgusting, तो फिर अपनी माँ के साथ किसी दुकान में है और आपके कोई गंदी सी बदबू आने लगती है तो आपको ऐसा पता चलता है कि आसपास कोई हिप्पी था जो हिप्पी वहाँ आ गया है So the only qualification is you're so fallen that you somehow or other get causes mercy from Krishna and Prabhupada and Vaishnavas. That's your only qualification. They're the lowest of the low. तो आपकी केवल यही एकमात्र योग्यता है कि आप सबसे पतित हैं और किसी तरह से अहैतुक की कृपा मिली आपको प्रभुपाद वैष्णव से Right, then they blow their brains out with drugs for all of these years, and now all of a sudden those are spiritual authorities. सालों सालों से इन्होंने नशा करके अपने दिमाग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया अब अचानक से वो ऐसे भक्त बन गए I mean, let's be honest. I mean, they don't even have material education, most of them. तो ईमानदारी से कहें तो उनके पास बहुत से लोगों को भौतिक शिक्षा भी They were hippies. They're from broken homes, हिप्पी थे जो जिनके घर बार टूट broken चुके हैं societies. जो टूटे फूटे समाज से आए थे So, they were crazy then, and now when they're acting like, Manjaris in the mood of separation, they're crazy now. तो पहले वो पागल थे अब वो जो है मंजरी और गोपी की तरह दिखने का प्रयास कर रहे हैं अभी भी वो पागल हैं They need some causeless mercy. उनको चाहिए तो They need a guru. तो गुरु की जरूरत है I'm sorry to say it. They're temporarily insane. तो मैं क्षमा कीजिएगा लेकिन वो अस्थायी रूप से पागल हैं And I'll challenge them. और मैं उनको चुनौती दे सकता हूँ Let them come. You give your presentation, Maharaj, and we'll give our presentation for Prabhupada's books and teachings, and we'll let everybody decide on their own. तो आप आइए अपना प्रस्तुति दीजिए और हम अपनी प्रस्तुति देंगे गुरु साधु शास्त्र प्रभुपाद की शिक्षाओं के आधार पर और लोगों को हम जानेंगे We invite them all the time, many times, and none of them want to come and discuss any of this stuff. तो हम हर बार उनको निमंत्रण देते हैं लेकिन कभी वो हमसे आकर इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते So this Maharaj, he looks like a sadhu, he looks austere, he's skinny, he speaks Hindi, right? He looks like he's living in a cave, and then he just starts talking like some, opposition party political activist, just trashing all these other politicians, That's all it was about, wasn't it?
तो ये महाराज बहुत बड़े साधु जैसे त्यागी तपस्वी दुबले पतले गुफा में रहने वाले मनुष्य की तरह लगते हैं, और जब वो बात करने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे विरोधी राजनीतिक दल के कोई व्यक्ति दूसरे दल के बारे में बोल रहे हैं। I'm giving you the totally unfiltered, what do you say, presentation. This is a totally unfiltered presentation. मैं आपको जो प्रस्तुति दे रहा हूँ बिना किसी कटाई छटाई एकदम सीधा सीधा पूरा ईमानदारी से आपको प्रस्तुति दे रहा हूँ। If anyone had any doubts in me before, they don't after this one. अगर किसी का मेरे अंदर कुछ भी संदेह है, इसके बाद अब कोई संदेह नहीं रहेगा। I was trying to be nice, sort of. पहले मैं थोड़ा अच्छे तरीके से, But now the gloves are off. Gloves are off. अब मैं Now it's a war. Now it's a war. अब जो है You need a good fight, you know. मुझे अच्छी लड़ाई की जरूरत I was getting bored, you know. Now it's like we need a fight. पहले मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, अब मैं तैयार हूँ, अब हमें लड़ाई की जरूरत है। Let the hippies all get together. चलिए सारे हिप्पियों को एक साथ मिलाएं। We feel, you know, we'll start with the devotee care. We're part of the devotee care department. तो कैसे देखभाल की जाती है उसके विभाग में। You can palm your heart and sentimentally talk about devotee care and compassion and speaking sweet words and all this stuff. तो छाती पीटते हुए आप कह सकते हैं हम भक्तों की देखभाल करना चाहते हैं, हमारे अंदर करुणा है और ये सब चीजें लोगों को दिखाना चाहते हैं, नाटक आप दिखाना। Sanatan, you want to go back? Come on, man. You gotta go back to Bombay, right? I gotta send you back for more programming, you know. The best thing that happens to them is they end up becoming Ritviks. सबसे अच्छी चीज जो उनके साथ होती है अंत में वो ऋत्विक बन जाते हैं। Because at least they go back to Prabhupada, right? कम से कम वो प्रभुपाद के पास वापस चले जाते हैं। Because there's no doubt about Prabhupada's position. क्योंकि प्रभुपाद के स्थान की कोई संदेह नहीं। So now if you're really a follower of Prabhupada and completely depending on Prabhupada, and you'll never want to leave Prabhupada or his institution, we're going to pray and cry to Prabhupada, Prabhupada, what am I supposed to do? How do I coexist in this situation with these people? Like, where's my place in all of this thing? अगर आप प्रभुपाद के असल में अनुयायी हैं, उनके निर्देशों का पालन करना चाहते हैं, उनके प्रति उनके संस्था के प्रति नमवान होना चाहते हैं, उनकी संस्था को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, तब आप प्रभुपाद के सामने रोएंगे और प्रार्थना करेंगे कि इन सारे लोगों के बीच में मैं कहाँ जाऊँ। So Prabhupada said, yeah. प्रभुपाद आपको यहाँ भेजा। We are the alternative. हम आपका दूसरा विकल्प हैं। But it is hidden. Ritvikism is not the final destination. लेकिन ऋत्विक व्यवस्था ये अंतिम लक्ष्य है। It's like when you're on a train, right? It's not the final destination, but you may ride it for like some time, you know? जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, किसी स्टेशन पे आप पहुंचते हैं, लेकिन वो आपका अंतिम पड़ाव नहीं है। So they get like say 80%, 90% correct. तो वो 80% या 90% सही है। Because they're understanding what is pure devotee. क्योंकि वो समझ पा रहे हैं And शुद्ध you should भक्त put क्या है। your intelligence and your faith in the pure devotee. और वो अपनी बुद्धि और श्रद्धा एक शुद्ध भक्त के अंदर डालते हैं। But the conclusion's not correct. लेकिन वो गलत निष्कर्ष पे पहुंचे। And then because you don't see any pure devotee, then you just say they don't exist. There is no representative, you know, after Prabhupada. क्योंकि वो शुद्ध भक्त को देख नहीं सकते, तो वो प्रभुपाद के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को स्वीकार नहीं So think about करते, this, वो right? प्रतिनिधि है। That Srila Prabhupada, you see what he did. He's the first personality who came out of India, right, from Bharatavash, on the order and instruction of his guru, right, carrying Mahaprabhu's parampara, full mercy, potency, knowledge, authorization, everything, and he can't make one pure devotee? अब देखिए प्रभुपाद एकमात्र At least one? जो भारतवर्ष से निकले महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गुरु के आदेश पर निर्देश को पूरा करने के लिए और महाप्रभु के द्वारा सशक्तिकरण प्राप्त करके उन्होंने इसका प्रचार किया, लेकिन वो इतने शक्तिशाली होने के बावजूद एक व्यक्ति को शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। So what faith did they have in Prabhupada? तो क्या विश्वास है उनको प्रभुपाद? And this argument, ISKCON is
showing to their disciples, means those who are going to become their disciples, and they are showing this argument to accept them as guru. That don't you think that Prabhupada has made even one pure devotee like that, and they are showing themselves as gurus? So then accept what? They're using the same argument. Don't you think Srila Prabhupada could have made a pure devotee? And you know, they're saying, look it up, you know, look at us. Look at that. But it ain't you. He definitely did, but that ain't you. यही इसी तरह से इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है जो लोग गुरु हैं इसका नहीं को दिखाने के लिए लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कर सकते एक व्यक्ति को शुद्ध बनाना शुद्ध भक्त बना सकते तो हम हैं वो शुद्ध भक्त बस प्रभुपाद बना सकते लेकिन वो आप नहीं हैं. And then when everyone starts figuring it out, right? All their followers, disciples, what do? They say, I'm just connecting you to Prabhupada. जब लोगों को समझ में आने लगता है पता चलने लगता है उनके शिष्यों को तो वो बताने लगते हैं कि मैं आपको केवल प्रभुपाद के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ. Isn't it? Yes. So I'm not really qualified. तो मैं असल में मेरे पास योग्यता नहीं मैं असल गुरु नहीं हूँ. I can't really do the work of the guru मैं गुरु का कार्य भी नहीं कर सकता. because it's Prabhupada as a guru. लेकिन प्रभुपाद गुरु हैं. So in all my humility एक पूरी विनम्रता में and my utter with the straw in my mouth, तो दांतों में तीन लेकर taking the dust of your lotus feet on my head, आपके चरण की धूली अपने सर पे लेकर pray to Prabhupada. मैं प्रभुपाद से प्रार्थना कर रहा And हूँ. they start showing all this emotion and sentiment and love for Prabhupada. And then, Prabhupada, please somehow connect this person to you. They do this whole drama. तो फिर अपना पूरा भावुकता अपनी भावनाएं का दिखाने का पूरा नाटक दिखाने का प्रयास करते हैं कि प्रभु की प्रभुपाद के अपनी भक्त के साथ जोड़ लीजिए. Isn't it true? ऐसा है नहीं. This is just what I saw. लेकिन मैंने That's देखा the truth. और ये सत्य है. And I saw it again and again and again and again and again. मैंने बार बार And then I saw someone who's not like that. और फिर मैंने देखा Who's उस not व्यक्ति living को like that. जो ऐसा नहीं करेंगे. Then I can see the difference. तब मैं अंतर देखता हूँ. And when I heard your lecture, you were covering all the points which I knew, like the decentralization. Prabhupada wanted decentralized system, and this guru should not be appointed by GBC, and like these all the points you were covering in your lecture. I was hearing the recording. Well said, a self-made guru cannot be a guru. पता है आपने जितनी सारी बातें की गई केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए जीबीसी के ऊपर गुरु नियुक्त नहीं होना चाहिए. गुरुदेव ने बताया कि प्रभुपाद ने इस व्यवस्था बनाई उन्होंने ये निर्देश दिए कि गुरु स्वयं निर्मित गुरु नहीं बन सकता. So, if 5 of you get together and you say, let's make him a guru, and then he'll do so many things and then we'll all benefit from whatever he does, So all the Vaishnavas got together and they decided by Krishna's manifestation collectively, they got this inspiration, faith and intelligence to say that you should be a guru. And then I cried before the deities. And anyway, somebody has to do it, right? And this is the drama. This is the nonsense. तो इस तरीके से बनाना करते हैं कि हमें से 5 लोग यहाँ मौजूद हैं और 5 लोग जो वैष्णव समिति उनके निर्णय करते हैं कि इन व्यक्ति को गुरु बनाया जाएगा और जब ये आगे बढ़ेंगे उन्नत होंगे इन सब से सभी लोग लाभ उठाएंगे. और वैसे भी हमें कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए वर्तमान में कोई गुरु मौजूद नहीं है और हमने विग्रह के सामने हमें रोया है और कृष्ण से हमें प्रेरणा मिली है श्रद्धा मिली है बुद्धि मिली है. You know I'm speaking the truth. पता है मैं सच बोल रहा हूँ. You're nervous, but you know I'm speaking the truth. सहम रहे हैं थोड़े लेकिन आपको पता है मैं सत्य बोल रहा हूँ. I remember thinking all of these things, but I was afraid to think about it. मुझे याद है मैं इन सारे विषयों के बारे में मैं सोचता था लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता था कि Because I didn't know, is this Maya or is this Krishna just giving me intelligence? Like I'm afraid because I don't know what it is, मुझे पता नहीं था. मैं थोड़ा भय होता कि ये माया है या कृष्ण मुझे बुद्धि दे रहे हैं क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं थोड़ा भयभीत I don't want to, misunderstand and then I commit an offense and then, I don't want to also, nuke myself, मैं कुछ चीजें गलत समझ के कुछ अपराध किसी को कुछ बुरा लगाना नहीं चाहता था और अपने आप को उड़ाना नहीं चाहता इस प्रक्रिया से.
let's figure out how this bomb works, you know. कि मैं किसी बम को पता लगाने का सोच रहा था कि बम काम कैसे करेगा. So when I went to Bhubaneswar and I started hearing from Srila Govinda Swami, he's speaking like so heavy, so boldly the truth, and I was like, oh my God, I never heard anybody speak like this. जब मैं भुवनेश्वर आया श्री गौरव से हमारा से मैंने सुनना शुरू किया, उन्होंने सत्य इतनी हिम्मत से बोलना शुरू किया, मैं तो सुन के शॉक गया कि कोई ऐसा सत्य बोल सकता है. Because I met him in Los Angeles and when he was preaching in the West, right? Now I'm in Bhubaneswar, like where he lives with his family and his devotees, then he's in his own house, right? And his own family, he's just gonna be who he really is, right? So I didn't see that when Gurudev was preaching in the United States. तो जब श्री गौरव से हमारा लॉस एंजलिस में आए थे, उन्होंने वहाँ पर दर्शन किया था, तो वो विदेश में आए थे प्रचार करने के लिए, लेकिन जब जिस बार वो भुवनेश्वर में थे, अपने भक्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, तो उन्होंने वो दिखाया कि वो असल में वो कौन है. So when I came to Bhubaneswar and Gurudev started saying all of these things, I was like, oh my God, finally, you know, I'm not going crazy. That was my first thought. I'm not like an eternal, perpetual operati. It was actually God-given intelligence. जब मैंने श्री गौरव से हमारा से सुनना शुरू किया, ये सारी बातें तो मुझे समझ में आया, मैं असल में पागल नहीं था, मैं कोई नित्य अपराधी नहीं हूँ, ये भगवान का दिया हुआ बुद्धि था. And then everything Krishna was trying to tell me, now Gurudev is saying same thing, so he's confirming it as true. जो भी चीजें कृष्ण मुझे बता रहे थे, वो गुरुदेव ने मेरे सामने पुष्टिकरण कर दिया कि सारी बातें सत्य थी. And then if I was thinking, how he doesn't care about being politically correct. बिल्कुल चिंता नहीं करता है कि वो राजनीतिक रूप से सही बातें He's not trying to protect his position as a GBC, as a guru, as a leader in ISKCON, as Prabhupada disciple. He's not speaking like he's trying to protect his position. He's just speaking the truth. और वो अपने पद को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि वो गुरु हैं, जीबीसी हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं, अपने किसी भी पद या स्थान को बचाने के लिए वो सत्य बात नहीं कहते. So if you're really materially motivated, you can never speak like that. अगर आपके पास भौतिक उद्देश्य है आपके अंदर, तो कभी भी इस तरीके से आप बात नहीं कर पाएंगे. Because you risk everything. क्योंकि सारा खतरा आप उठा रहे हैं. So there's a speaker of the absolute truth. तो वहाँ के परम सत्य के प्रवक्ता. And I was seeking this type of someone who would speak the truth to me. और मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसे व्यक्ति जो ऐसा सत्य मुझे बता सके. To give me understanding and a shelter and protection. तो मुझे सही समझ देने के लिए मुझे आश्रय और रक्षण देने के And लिए. somehow Prabhupada showered his mercy on me. और किसी तरह से प्रभुपाद ने अपनी कृपा मेरे पर बरसाई. Krishna showered his mercy on me. और कृष्ण ने अपनी कृपा मेरे पर And I बरसाई. met Srila Govinda और Swami. मैं श्री गौतम से मिला था. Like a hidden gem. तो छुपा हुआ रत्न होगा. It is covered by Krishna's energy, internal energy. Discovered by? Krishna's internal energy. He said it was arranged by Krishna's internal energy. Of course. Hide कृष्ण की it. अंतरंग शक्ति के माध्यम से व्यवस्थित की हुई थी. तो मुझे बताया अवश्य. Prabhupada said this is the mystery of disciplic succession. प्रभुपाद कहते हैं ये परंपरा का रहस्य है. Because that's directly manifestation of Krishna's mercy. क्योंकि वो सीधे सीधे कृष्ण की कृपा का एक प्रकट रूप है. So if you don't want to hear from Krishna, you're not going to understand who is Krishna's own man, who is the pure body leading of Krishna. अगर आप कृष्ण से श्रवण नहीं कर पाते, आप ये नहीं समझ पाएंगे कृष्ण के खुद के व्यक्ति कौन है, उनके प्रतिनिधि कौन है. Because that intelligence and faith, Prabhupada says, it comes from the Lord of the heart, Chaitanya Guru Paramatma. और बताते हैं कि ये बुद्धि और श्रद्धा भगवान से आती है जो परमात्मा के क्षत्रिय रूप में हमारे हृदय में स्थित है. So Gurudev, when I So was if you know Guru Tattva and Paramatma Tattva, it's the same. तो अगर आप गुरु तत्व परमात्मा तत्व जानते हैं, ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं. It's just internal and external. ये भीतरी है और एक बाहरी. And then the chairman of the GBC said, we're not interested in the super soul. और जीबीसी के जो चेयरमैन थे वो कह रहे थे हमें परमात्मा में कोई दिलचस्पी नहीं है.
You're supposed to be the external manifestation of the Super Soul Maharaj. महाराज आप तो परमात्मा के बाह्य प्रकट रूप होने चाहिए. So if you're not interested in the Super Soul, then who exactly is telling you to preach to me? Where are you getting your information from, Maharaj? अगर आपको तो परमात्मा में दिलचस्पी नहीं है तो आपको बुद्धि कहाँ से मिल रही है मुझे प्रचार करने के लिए परमात्मा के अलावा. So when I was in ISKCON, before knowing all these things, so I was listening that lecture of that Maharaj's disciple. The one who's a politician? Yeah. The renunciant politician? Yeah. So The I was. opposition party leader? Yeah. So I was having It's this. called austerity, the austerity party. Actually, I also got distracted to ask my question. You get the what? I got distracted to ask my question. You got a letter? He's getting distracted about asking his question. You can ask me anything. Anything. We feel all questions. Doubts, questions, complaints, everything. Fears, anxiety, whatever you have, no problem. हम सब कुछ पूरा कर देते हैं. सवाल हो, संदेह हो, प्रश्न हो, चिंता हो, भय हो, सब कुछ सिखाए, सब कुछ हम उसका स्वागत करेंगे. So I was having inquisitiveness about that same question, the Jiva fall from Vaikuntha. Then you got your answer. Yeah. So that disciple, he was actually showing us this quotation. Maybe Adam Prabhu can read it. From Prabhupada? From Prabhupada about Jiva fall, and you can explain why Prabhupada is speaking like this on that letter. Look, here's the point. Prabhupada said many things. Okay? He's preaching to people who are atheists and impersonalists. प्रभुपाद ने कई सारी बातें की. प्रभुपाद ने उन लोगों को प्रचार किया जो पूरी तरह से नास्तिकतावाद के में थे. And he's trying to just say, you have an eternal loving relationship with Krishna, but you have forgotten him. वो केवल इतना बताने का प्रयास कर रहे थे आपका भगवान के साथ नित्य प्रेम में संबंध है और आप उसको भूल चुके हैं. So if you are reestablished in that eternal loving relationship and you agree to cooperate and serve him, then you'll be peaceful and happy in this lifetime. And when you leave this body, then you'll go back to him. You'll go back home, back to Godhead. Right? It's a very, very simplistic type of truth, but condensed, simple way that any ordinary, new, ignorant person could start to begin to understand about Krishna, about themselves, and what is their relationship. तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि आपके जीवन में दुख है, अगर आप बस केवल सहमत हो जाते हैं कृष्ण के साथ अपने प्रेम में संबंध में अपने वापस उसको स्थापित करने के लिए, तो आपके सारे जीवन के दुखों का इस जन्म में और अगले जन्म में और अंत में आप भगवत धाम वापस पहुंच जाएंगे. और ये सबसे सरल तरीका है किसी भी एक व्यक्ति को समझाने के लिए आध्यात्मिक जीवन के बारे में और भगवान के साथ उसके संबंध के बारे में. That side, all they do is present those quotes. They don't present the other quotes. तो देखिए वो सारे इन कथनों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो दूसरे कथन प्रभुपाद ने दिए हैं उनको प्रस्तुत नहीं करते हैं. But the one who understands all the quotes, according to time, place, circumstance, and candidate, their understanding is more complete. और जो प्रभुपाद के सारे कथनों को समझ पाते हैं देश काल समय पात्र और शिष्य के आधार पे उनका समझ पूर्ण है. Because they're understanding everything in relationship to each other and in context according to those different time, place, circumstance, and candidate. क्योंकि वो उन सारे कथनों को वो सही तरीके से समझ पा रहे हैं और देश काल समय पात्र के आधार पे कैसे उनको प्रस्तुत किया गया. So Prabhupada said, just chant, dance, take prasad, go back to Godhead. तो That's true. कि कीर्तन करो, नाचो, प्रसाद और भगवान हम वापस चले जाओ, ये सत्य है. But where is all the information that Prabhupada said, if I told you all this other information, you never would have even joined? वो सारी जानकारी क्योंकि पता चले जहाँ प्रभुपाद ने कहा था कि मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा तो आप लोग में से ज़्यादातर कोई जुड़ेगा भी नहीं. So without understanding all of that and taking it
in a complete way and reconciling it, then you'll definitely be confused and bewildered by one argument or the other side of the argument. But if you can take all of it in every individual specific way, explain how and why Prabhupada is saying like that, and then in conclusion, out of everything else that I said, nobody falls from Vaikuntha. Why don't they ever quote that to him? तो जब सारे कथनों को एक साथ लेकर आया जाएगा और एक एक कथन को देखा जाएगा कि समय काल परिस्थिति के आधार पर किस तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया और इन सब को होने के बावजूद भी जब प्रभुपाद ने अंत में ये कहा निष्कर्ष में कोई भी वैकुंठ से नहीं मिलता है. It's like Krishna Bhagavad Gita is explaining about karma, about jnana, about the yoga, right? He's describing all the different processes in the Vedas and the different yugas, right? Explaining everything, right? कृष्ण भगवद गीता There's something for everybody. कर्म ज्ञान योग वेद और अलग अलग तरह की पद्धतियों के बारे में बता रहे हैं तो उसमें वो सारी चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं. But then finally he said, just abandon all of that other thing. लेकिन अंत में वो कह रहे हैं सारे अन्य चीजों को आप त्याग करें. Krishna said, just abandon, it's all kaitava dhamma. Just abandon it, just surrender to me. कृष्ण कहते हैं ये सारे कर्तव्य धर्म हैं इनको त्याग करो और केवल मुझे शरण करो. Actually, when I was he coming? Hare Krishna. So I was completely convinced what philosophy Prabhupada is trying to preach, that yad gatva na nivartante tad dhamma paramamama. Once we are reached there in spiritual world, no one can, even Krishna is saying in Bhagavad Gita, no one can come again here. And the philosophy is like this only. And but only this one letter or somewhere. Look, I also heard a recording of. We'll discuss it. Yeah. Now's not the time. Okay, we will discuss it. Point by point, word by word, sentence by sentence. Okay, I'm not saying this to avoid it. Don't misunderstand me. But this is a big conversation. Okay, it's the end of the night. Okay. I have to understand the total situation here, right? I'll show you all the quotes I have from Prabhupada's books and teachings, which exactly substantiate what I'm emphasizing as the conclusion. And then you take that whole package together and you pray to Krishna internally to give you intelligence and faith, and by their mercy, you'll be able to get a wider, more deeper, more kind of complex and more complete type of understanding. तो ये एक बहुत ही लंबी चर्चा है और समय को ध्यान में रखते हुए हम उस पर अभी ज़्यादा समय नहीं ले सकते. मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन समय के साथ हम सारे एक वाक्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे वर्ड बाय वर्ड. और आप कृष्ण को प्रभुपाद को प्रार्थना कीजिएगा और आप खुद देखिएगा, खुले मन से खुले विचार से समझने का प्रयास कीजिएगा और आप खुद निर्णय कीजिएगा. Okay, is that fair? Yeah, it is fair. Also, I don't have any doubt in this philosophy. You should be convinced, man. Yeah, I am convinced already. No. I'm saying you have every right to ask. You have every single right to get all this information so that you're completely convinced. आपका पूरा अधिकार है एक सवाल उठाना और स्वयं को आश्वस्त करना, सारे संदेहों को नष्ट करना. So no problem. I have no problem with that. मुझे उससे कोई समस्या नहीं I'm है. happy to try to help you to understand. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको समझने के लिए मदद करने का प्रयास करूंगा. Of course we're going to have questions and doubts. अवश्य हमारे प्रश्न होंगे, हमारे That's संदेह understood. होंगे. और ये बहुत ही जाहिर सी बात है. Right? And it's natural. और ये बहुत स्वाभाविक है प्रश्न. So we just, by the mercy of Guru Krishna, we need, okay, who can understand it and explain it in a way that makes sense to me, that you accept it according to Guru Sarva Shastra, where your soul is just satisfied with that explanation. That's Guru. Only a Guru can do that, by Krishna's mercy. अब कृष्ण की कृपा से अब हमें बस केवल यही बात समझनी है कि कौन मेरी इस बात को समझ पाएगा और मुझे सही तरीके से इसका विवरण दे पाएगा. गुरु साधु शास्त्र के आधार पे जो मेरी आत्मा को आश्वस्त कर पाएगा, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो पाऊंगा उस उत्तर से. They just say, look, these are the quotes, just accept it. Then they get angry, then they get uptight, then they just, you're just causing trouble, right? They just do a whole guilt trip on you, or you have no faith, you're an offender, right? But you never answer the question.
आप जो सवाल पूछते हैं तो महाराज आपको कुछ ये सारे कथन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे आप इसको स्वीकार कीजिए, नहीं स्वीकार करेंगे तो आपके गुस्सा होंगे, कहेंगे आप अपराधी हैं, आपको विश्वास नहीं है और ये सारा पूरा आपके ऊपर दोष और इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे। कहेंगे महाराज आपने तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। Okay, Maharaj, I'm a rascal, I'm the most fallen, I'm stupid, I'm puffed up, I'm a troublemaker. Okay, I agree with all of that. But you didn't answer my question. You didn't destroy my doubt. I'm sorry. That's your job. That's your responsibility. And you didn't convince me. You didn't persuade me. I'm open. I'm here. I'm asking. I'm begging you. And you can't answer my question. And you can't destroy my doubt. So why exactly should I accept you as my guru? ठीक है महाराज, मैं बहुत बड़ा बदमाश हो सकता हूँ, मैं अपराधी हो सकता हूँ, मेरे अंदर विश्वास नहीं है, सारी कुछ बुरी चीज मेरे अंदर है, लेकिन फिर भी मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मेरी आशा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे, मेरे संदेह को नष्ट नहीं कर पा रहे, फिर क्यों मुझे आपको स्वीकार करना चाहिए? That's your job, Maharaj. ये आपका काम है महाराज। It's my job, it's my responsibility to say, this is my question, this is my doubt. I'm doing my part. मेरी जिम्मेदारी, मेरा दायित्व है मेरे संदेहों को, मेरे प्रश्न को आपके सामने रखना। Right, Arjuna, he went to Krishna, Krishna Master, this is my question, this is my doubt, how do I understand this? How do I overcome this doubt? Right, so he's acting like a disciple, he's acting like somebody who's trying to understand and reconcile everything. But he's also going to qualify Guru, Krishna, to get it, really answered in a way at the end that Arjuna just said, look, you convinced me. तो अर्जुन अपने प्रश्न, अपने संदेहों को लेकर कृष्ण के पास जा रहे हैं, जो कि एक सही योग्यवान व्यक्ति है इन प्रश्नों को उठाने के लिए, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आश्वस्त होना चाहते हैं इन प्रश्नों का उत्तर पाने। And if you really qualified disciple, really qualified seeker of the truth, Krishna cannot convince you. तो अगर आप असल में सत्य की खोज कर रहे हैं, परम सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं, संदेह को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कृष्ण आपको आश्वस्त नहीं कर पाएंगे परम सत्य बताकर? So Krishna will also send you, give you intelligence and faith, make arrangement who can speak in a way. Krishna will use them to speak in such a way that Krishna will convince you. तो कृष्ण आपके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसे व्यक्ति के पास भेजेंगे, उनके प्रति बुद्धि देंगे और श्रद्धा देंगे और आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करेंगे। According to Guru Sadhu Shastra. गुरु साधु और शास्त्र के आधार Scientifically convince you. वैज्ञानिक तरीके से आपको आश्वस्त करेंगे। Not just say, I am the authority. Why you just don't follow except what I'm telling you? बस ये नहीं कहेंगे कि हम अधिकारी हैं, आप वो क्यों केवल स्वीकार नहीं करते जो मैं And they get angry. और फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, They get परेशान होने लगते हैं uptight. और क्रोध करने लगते हैं। You're like a brand new ignorant person, man. Please excuse me, Maharaj. तो बिल्कुल Why are नए you out preaching if this is the way you feel about it, तो हम तो बिल्कुल नए अज्ञानी लोग हैं, हमें तो कोई ज्ञान ही नहीं है, तो फिर आप प्रचार करने क्यों निकले अगर आपको ऐसा महसूस होता है हमारे से? You're not the right guy for the job if you're getting uptight with a brand new person's questions and doubts. आप सही व्यक्ति नहीं है इस काम को करने के लिए। कोई नया व्यक्ति आके आपसे कुछ सवाल उठाता है, कोई प्रश्न पूछता है, आप You need to go teach someone the Sandabhas, Maharaj, आप जाके संदर्भ सिखाइए। They call it this Prajalpa. This is the discussion on this topic is Prajalpa. It's what? ग्राम्य कथा। He says that the discussion on this topic, they consider it to be Prajalpa. Once I was about to get training. This discussion about the absolute truth and understanding all the tattvas, right? That's Prajalpa. But all the other nonsense they're doing and saying, that's all authorized because we're the ultimate managing authority, परम सत्य के बारे में चर्चा करना, परम सत्य को कैसे जाना जा सकता है, तत्वों को समझना, ये सब वो प्रजल्पा कहते हैं। और जो फालतू बातें कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करना, और ये जो परम व्यवस्थापक अधिकारी है उसको बातचीत करना चाहते हैं। That's the most foolish, stupid thing I ever heard in my life. सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात है। I can't even believe somebody would tell me like मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा कि ऐसी बात हो सकती है। Maharaj, So you're asking about a tattva, right? And that's Prajalpa. आप तत्वों की जिज्ञासा कर रहे हैं, उसको The very nature of the question is you're trying to understand the nature of the absolute truth, right? तो तत्वों का ये स्वभाव, प्रश्न का ये स्वभाव होना चाहिए कि आप तत्वों को समझने का प्रयास करें। That's Prajalpa. उसको प्रचल पकड़।
Let's talk about pranayama, no? चलिए प्राणायाम की बातें करते हैं. Do some hatha yoga, do some pranayama. थोड़ा hatha yoga, थोड़ा प्राणायाम. One of our, professional psychologists. हमारे पेशेवर मनोचिकित्सक के पास जाएंगे. That's not Prajapa. वो प्रजनन. This is nonsense. फालतू चीजें. At least you know now what you don't want. आपको ये पता है कि आप क्या नहीं चाहते हैं. That's also important. ये भी महत्वपूर्ण है जानना. Right? Now you know what you don't need. अब आपको पता है आपकी क्या जरूरत नहीं है, आप क्या नहीं चाहते हैं. Process of elimination. ये है छांटने की प्रक्रिया. That's why all roads lead to Srila Prabhupada. इसीलिए अपने सारे रास्ते श्रील प्रभुपाद की तरफ जाते हैं. And if you get Prabhupada's mercy, right, then you'll understand how Prabhupada is going to carry on his movement, how he's carrying on his movement. अगर आपको प्रभुपाद की कृपा मिलेगी तो आप समझ पाएंगे प्रभुपाद अपने आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं. Do you really think Srila Prabhupada won't make an arrangement for people who have faith and are crying and depending on Srila Prabhupada, how to serve him and his mission and institution? Prabhupada, he'll not make an arrangement to help you? Impossible. प्रभुपाद के आंदोलन में जो हमको मदद करना चाहता है, हमको सहयोग करना चाहता है, जो आंदोलन में श्रद्धा है कि प्रभुपाद जो लोग ऐसे रो रहे हैं, प्रभुपाद उन लोगों की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे. So this is all crazy types of arguments. ये सब बिल्कुल पागलपन वाले बहसबाजी. Because they don't have any answer, that's why they say that you will never come to any conclusion. If you're going to give an answer that's stupid and foolish, better you just shut your mouth, Maharaj. अगर आप ऐसे जिज्ञासाओं को फालतू कहेंगे तो बेहतर होगा महाराज अपना मुंह बंद रखें. It's like saying that's down and this is up. ऐसा वो कहना है. Really, Maharaj? ये नीचे है और ये ऊपर. Just ये accept ऊपर it. महाराज. I'm the ultimate managing authority. बस इसको स्वीकार करो. That's down. This is व्यवस्था up. का अधिकार. ये नीचे है और ये ऊपर है. सब कुछ उल्टा बता है. Come on, you need some common sense. कम से कम थोड़ा सा सामान्य ज्ञान तो रखिए. Jiva Tattva, Guru Tattva, these are all tattvas, right? So this discussion is all Prajapa, it's all materialistic. जीव तत्व, गुरु तत्व. They're materialistic. ये सब को भौतिक प्रजल्प मान रहे हैं. वो लोग प्रजल्प बातें कर रहे हैं. It's all going on. ये सब चल रहा है. Unfortunate. But, people need to get a good lesson and we need to learn, all of these different things one way or the other. So it's all part of the process. उनको सही चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, सही शिक्षा पाने की ज़रूरत है, एक तरीके से या दूसरे तरीके से. The problem is it's unfortunate because it's in Prabhupada's institution, in Mayapur, it's so close to the real thing. So it's very unfortunate that it comes at that stage. But it's also some kind of subtle filtering system of who kind of survives and goes through that and can, pass those tests as well. लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि ये प्रभुपाद के आंदोलन में मायापुर में ये सारी चीजें इस तरीके से हो रही हैं, लेकिन फिर ये तरह की छंटने की प्रक्रिया भी है. कौन इतने सारे सूक्ष्म परीक्षाओं को पास करके सही जगह पर पहुंच पाएगा. So we have to just keep praying to Krishna inside and Prabhupada and Gauritai and please, because it's very dangerous and it's very subtle and we're not so qualified. So we need a lot of mercy to understand it and have intelligence and faith how to maneuver through all of this dangerous, like landmines, तो लेकिन हमें इसे प्रभुपाद से गौरवताई से प्रार्थना करते रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म परीक्षाएं समस्याएं हैं और हम गड़बड़ी कर सकते हैं अगर हमें सही बुद्धि और कृपा और श्रद्धा न मिल पाए तो इस तरीके से हम किसी बम के ऊपर पैर रख सकते हैं. You didn't know there were landmines in Mayapur. आप जानते हैं हम मायापुर में जो है लैंडमाइंस बिछाए गए All over the place. सभी Be जगह. careful where you step. सावधान रहिएगा, आप कहाँ कदम रखने वाले हैं. Krishna will guide you. कृष्ण आपको मार्गदर्शन करेंगे.
Am I in trouble? No. Did I get in trouble enough? क्या मैं मुसीबत में पड़ने वाला हूँ? क्या मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ? Misha's like, his mind is blown. Someone's gonna have to preach to him after this class. रक्षा का दिमाग पड़ चुका है, किसी को प्रचार करना होगा इस क्लास के बाद। He's like, what am I hearing? सुन रहा हूँ मैं। The other Russian devotees, I've been saying this for 15, 20 years to these people. बाकी हमारे देश भक्त हैं, उनको मैं 15-20 सालों से हमेशा करता हूँ। They're just like, oh, that's Guru Dev, that's what he talked about. ये तो देव के जैसे होते हैं। Nothing new. कुछ नया नहीं। But there's a lot of new people trying to figure it out, so we have to explain it to them. बहुत सारे नए लोग जो बता रहे हैं प्रयास कर रहे हैं, हमें उनको ये थोड़ा Someone समझाने की took the जरूरत है। time to explain everything to you in the beginning, इसीलिए समय निकाला आप लोगों को सारा कुछ चीजें समझाने के लिए। so we have to try to help other people. दूसरे लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। Because we were in that exact place before. क्योंकि हम खुद उसी परिस्थिति में And थे। it's so disturbing. और ये इतना परेशान करता है, It's so frustrating. इतना हताश करता It's है, so disappointing. इतना निराश करता है। So, we've been there. We went through all of that. हम वहाँ थे, इनसे गुजरे। So I can think that Prabhupada's trying to use our experience to help other people who definitely will be coming and realizing all of these things. तो हम देख पा रहे हैं कि प्रभुपाद हमारे अनुभव को इस्तेमाल कर रहे हैं उन व्यक्ति की मदद करने के लिए जो वर्तमान में इस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और उनका साक्षात्कार कर रहे हैं। So we have to provide another alternative. तो हमें उनको एक दूसरा विकल्प देने की जरूरत है। That's why we stay. इसीलिए रुकते हैं। Because Prabhupada said never leave, my Guru said never leave ISKCON. That means we have some service here to find those people who want to follow Prabhupada and never leave ISKCON, but at the same time, how do you peacefully live in this environment? So there needs to be some kind of a separate option or opportunity, shelter. प्रभुपाद ने निर्देश दिया है, हमारे स्कूल में निर्देश दिया है, कभी ISKCON छोड़कर नहीं जा रहे। इसका मतलब हमारी कुछ सेवा है ISKCON में, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आश्रय रक्षण ढूंढ रहे हैं, तो ISKCON के प्रति श्रद्धा है और हमें उनको मदद करने की जरूरत है, एक दूसरा विकल्प देने की जरूरत है। We're not forcing anybody to come here. हम किसी को जबरदस्ती नहीं We're कर रहे not हैं, forcing anybody to stay here. हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे I'm हैं, trying to get rid of some of these people, मैं तो कुछ लोगों से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहा but they won't leave. हूँ, लेकिन वो जा नहीं रहे। I'm saying, go to one of these ISKCON gurus, and they're like, no. जाओ किसी भी एक ISKCON गुरु के पास ले जाओ, कहते हैं Like, please go to some of the gurus. They're like, no. कृपा करके किसी गुरु के पास So ले जाओ, I'm कहते stuck हैं with them. मैं फंसा हुआ हूँ उनके साथ। Right? That's why we leave the doors open. Just like, you know what I mean? Like maybe they'll just leave. We'll be like, thank God. इसलिए हम दरवाजा खुला रखते हैं, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, चलो अच्छा हुआ भगवान। Good luck to one of these other gurus. दूसरे गुरुओं के Then I come back the next day, they're still sitting there. दूसरे दिन आता हूँ, फिर देखते हैं वो यहाँ So, बैठे हुए हैं। okay, what to do? Try to help them there. ठीक है, क्या करें, उनकी मदद करने का प्रयास करना होगा। And then I'm speaking like this, it's like, why didn't Krishna just tell you to run out of the room? मैं इस तरीके से बातें कर रहा हूँ, तो कृष्ण आपको कमरे से बाहर जाने के लिए। And then if some part of you out of fear was saying, maybe I shouldn't listen to this, okay, why didn't you all just get up and just walk out of the room? और कहीं ऐसे कई भाग ये कह दे रहा है कि शायद मुझे इसे नहीं सुनना चाहिए, क्यों सारे लोग एक साथ खड़े होकर कमरे से बाहर नहीं चले जा रहे हैं? What made you stand? कौन सी चीज आपको यहाँ रहने के लिए मजबूर कर रही है? That's another interesting question. एक और दिलचस्प सवाल है। From an institutional point of view, I gave you every reason to leave. संस्था के नजरिए से मैंने आपको हर एक कारण दिया जिससे आपको यहाँ से इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। But because I spoke the truth about the reality of the situation, deep down in your heart, you know what I'm saying is true. लेकिन मैंने वास्तविक स्थिति की सच्चाई आपके सामने बताई, प्रस्तुत की, इसलिए आप हृदय की गहराई में आप समझ पाते हैं सत्य बातें बोलना। I'm just bold enough or crazy enough to say the truth. और मैं इतना हिम्मत वाला या पागल हूँ कि मैं सत्य बोल पा रहा हूँ। My Gurudev told me to be bold and be fearless. गुरुदेव ने कहा पूरे हिम्मत से निर्भय हो And don't hesitate.
और बिल्कुल हिचकना मत, Don't make any compromise. Exactly what you heard, say exactly what is the truth. कोई समझौता मत करना, जैसा सत्य तुमने सुना वैसा ही Don't सत्य add है, anything, don't subtract anything. ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। That's how Prabhupada trained us, that's how my Gurudev trained us. इसी तरीके से प्रभुपाद ने हमें प्रशिक्षण दिया है, मेरे गुरुदेव ने हमें प्रशिक्षण दिया है। I'm not going to adjust to all of this mental speculation and all of this manipulation and all of this brainwashing and it's madness. The world is mad, this place is mad. तो मैं इन सारे मनोधर्म के बीच में अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं करूँगा। ये पूरी दुनिया पागल है और हम ये सब लोग पागल हैं। In one recording of your lecture, I was listening that you were afraid for your Gurudev that someday he may start compromising or being Right. strong enough, not being strong enough. On the Jiva Tattva issue. Same afraid I was having. So, I was saying, Gurudev, why don't you just say like this, you know? Then they won't be hitting you over the head. And Gurudev could have saved himself from getting hit over the head by just cheating them, right? And just saying like this and that, right? And he refused to do it. And to the point that they want to throw him out of ISKCON. तो मेरे गुरुदेव ने And I was like, wow. You know, how Krishna, Prabhupada, you know, how they put me in such a situation where I could firsthand see that just to save himself, he could easily solve that. Because he's, you know, so much more of a scholar than all of them put together. To be honest with you, right? Yeah. And he could easily save himself and just basically kill the argument and the discussion, and right? He would not back down. He would get stronger. He would get more determined, challenging them. Right? He didn't care. Then when I was trying to be like, let's just do like little Indian politics with them. Hare Baba, just speak the truth. No compromise. Chill, get out of here. You never saw a big guy like squeak out like a mouse. That was like a mouse living in that room, man. Nobody could do that to me. Nobody. Except Shukra himself. Because of his gurutva, his spiritual power, his position. That's who I heard from, that's who I learned from. That's the instructions I'm trying to follow. तो उनसे मैंने श्रवण किया, उनके निर्देशों का मैं पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और श्रील गौरव से हमारा कभी भी किसी तत्व के ऊपर समझौता नहीं किया, यद्यपि वो इन सारी परिस्थितियों से खुद को बाहर निकाल सकते थे, समझौता कर सकते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सभी लोगों से मिलकर भी सबसे ज्यादा विद्वान थे और तत्वों को और ज्यादा भारी तरीके से वो प्रस्तुत करने लगे बिना किसी समझौते के। And who will speak like that? और कौन ऐसी बातें कर सकता Nobody है? will speak like that. कोई भी ऐसी बातें नहीं कर पाएगा। Number one, because they never heard it, they don't understand it, therefore they cannot say it. सबसे पहली बात उन्होंने कभी श्रवण नहीं की, कभी समझा नहीं, ना उसको लोगों को समझा सकते हैं। And if they really understood it and really heard it, they would have to speak the truth. अगर असल में उन्होंने सुना है, असल में उन्होंने समझा है, तो उनको सत्य बोलना ही पड़ेगा। So you do the math. तो अब आप अपना गणित खुद कीजिए। You do the math. अब आप अपना गणित कीजिए। All right? Any other thing? कोई अन्य चीज? Yes. Sham. You look too happy, man. This is a problem. You're supposed to be like hiding in the corner, table, waiting for some thunderbolt to come, you know. कुछ बिजली Too relaxed. अभी भी हम आराम से बैठे हैं। He's too happy. तो ज़्यादा ही खुश है। This is a problem. ये समस्या है। This is a problem. ये समस्या है। How to How to get miserable. You're used to being miserable. You don't know how to. I'm having trouble living peacefully and happily. It's kind of awkward for me. कैसे मैं अब कष्ट में रह सकता हूँ? मुझे ज़्यादा खुश और ये रहने में बहुत परेशान होने लगा हूँ। मुझे पता लगा कि कैसे मैं दुख में रह सकता हूँ। कष्ट में I kind of don't know what to do with myself. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुद के साथ क्या करूँ।
all the mental speculation is gone. It's like I'm kind of confused, like what else I should think about, you know. अब मेरा सारा मन मुझे पता चल चुका है, तब मैं बहुत भ्रमित हो गया, मैं क्या सोचूं? So, How to realize we're doing a satsanga as it's happening instead of after experiencing the consequence of doing a satsanga. how do you know what is the consequence? No, instead of realizing that you're doing a satsanga after experiencing the consequence and then seeing the consciousness being changed, to realize actually whilst it's happening, was there's Now you see the difference. yeah. So, but when to realize actually at the moment, so then we can leave or no, stop the. We have to have common sense. Okay, if you're so, you know, it's really simple. When you associate with this person and you hear whatever he's saying and you just try to follow it, what happens to you? What is your result? And for whatever reason, you don't accept it, you don't want to hear it, and you hear from somebody else, and you follow someone else's instruction, right? Then what is that result? And then you have to decide what type of lifestyle and consciousness and results is more convincing and satisfying to me. So the result, Prabhupada said, you judge the thing by the result is actually what will convince you, and then you have to be smart enough and have enough common sense to realize, okay, you know, real happiness is better than like fake happiness, right? तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे जो है सत्संग करने से पहले हमें पता चल जाए और ताकि हम बच सकें सत्संग हम करने का हमें मौका मिले तो उधर ये बहुत ही सरल है पता लगाना तो जब आप किसी एक व्यक्ति से श्रवण कर रहे हैं उनके निर्देश को पालन कर पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं आपके अंदर कैसा प्रभाव हो रहा है और किसी भी कारण से आप सब उस व्यक्ति के निर्देश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं पालन नहीं कर रहे हैं तब आपके अंदर कैसा प्रभाव दिख रहा है प्रभुपाद कहते हैं आपके पास कोई सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि देख पा रहे हैं क्या असल सुख है और क्या नकली सुख है Later on you can figure out how's it actually working, you know? बाद में आप पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं कि असल में काम कैसे करता है कि तकनीकी रूप से कैसे काम कर रहा है Prabhupada said, just like the doctor, you know, he gives you some medicine. इस प्रकार बता देते हैं जैसे कोई डॉक्टर आपको कोई दवा देता If है you're really sick, you're dying. और आप बहुत बीमार हैं आप मर रहे हैं And he's like really reputable doctor. He said, just take this tablet, right? और असल में वो कोई जाने माने डॉक्टर हैं तो वो आपको कहेंगे आप ये टैबलेट लीजिए You're putting some faith in the doctor, right? तो आप डॉक्टर के ऊपर कुछ विश्वास करते हैं And then you start taking it, all of a sudden you start feeling much, much better. और फिर आप उसको लेना दवा को लेना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे आपको बेहतर महसूस होने लगता है And then you feel like, whoa, I'm really getting some recovery. I'm getting well. That's a really nice doctor. He gave me some really nice medicine. और आप देख पाते हैं कि मैं धीरे-धीरे ठीक हो रहा हूँ और बेहतर होता जा रहा हूँ यानी कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं उन्होंने बहुत अच्छी दवा दी है So you may not know chemically or physiologically or biologically how that medicine is actually working on you. तो आप रासायनिक तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दवा आपके अंदर किस तरीके से काम कर रही है लेकिन ये काम कर रही है काम को समझ But you can see by the result of whatever it is, it's really good medicine. I see it, I go well, right? लेकिन आप फल के आधार से देख पा रहे हैं कि दवा किस तरीके से काम कर रही है मैं समझ नहीं पा रहा लेकिन फिर भी मैं अच्छा बेहतर हो रहा हूँ And Prabhupada said, like, if someone gives you poison, you know, it's going to kill you. प्रभाव अगर देते हैं अगर आपको कोई जहर देता है तो वो आपको जहर You may not understand how that poison is working, it's still going to kill you. आप हो सकता है ये समझ ना पाएं कि जहर कैसे आपको मार रहा है फिर भी आपको मारेगा So gradually you'll start to understand exactly, technically, you know, scientifically, spiritually, you know, how is it actually working? Because it's beyond subtle. So how are you going to understand all of those things? Just see by the results, okay, there's good results, heading in some good direction, getting out of trouble. Okay, anyway, I don't know what's going to happen in the future, but I'm just going to keep going in that way because it's the best of all other options at this stage of the game. And somehow Prabhupada, Krishna helping me, so I'll just go like that. I'll just put faith in Prabhupada and Krishna, and whatever I need will automatically, by their mercy, come to me. तो
जब आप इसका औषध को लेना शुरू कर पा रहे हैं तो ये धीरे धीरे की प्रक्रिया है। बाद में आप समझ पाएंगे कैसे इसने आपको ठीक किया, आपको बेहतर होना शुरू किया, आप स्वस्थ होने लगे। ये बात की प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ पा रहे हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुरु और कृष्ण की व्यवस्था के हिसाब से आप इस जगह में मौजूद हैं, और बाद में क्या होगी वो बाद आपको धीरे धीरे गुरु कृष्ण की कृपा से आगे चीजें प्रकाशित हो जाएंगी। Thank God he didn't stay in Pune. Yeah. He was thinking about becoming a Mayavadi, you know, मायावादी कैसे बनेंगे? because of this satsanga. असत्संग की वजह से Somehow he got some mercy, right? He got some nice medicine. कुछ कृपा मिली, कुछ अच्छी दवा मिल गई, Saved him from the brainwashing. हम लोग को ब्रेन से बचा लिया। He's much more healthy, happy now, isn't it? स्वस्थ और ज्यादा सुखी हो चुके हैं। Now you feel better? Yeah? Thank God. Wow. धन्यवाद। And he's our Hindi translator. My God, and what happens if he goes? I think, for the sake of everybody else, that Guru Krishna saved that guy. So, does that help you? Just see the results. If your soul is not satisfied, it means that, we're not connecting and cooperating properly with Krishna. We're misunderstanding something. It's either coming from our side or the environment or the association, because the results is not satisfying. So why is it not working? तो अगर हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं है तो हम कृष्णा के संपर्क में नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कृष्णा को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, इसीलिए हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। We should be smart. We should be scientific. Okay, I don't like the results. It's not working. Why? तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से देखना चाहिए कि हमें फल नहीं मिल पा रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है। Prabhupada says that the speaker must be qualified, but the hearer must also be qualified. प्रभुपाद कहते हैं प्रवक्ता को योग्य होना होगा और श्रवणकर्ता को भी योग्य होना होगा। Prabhupada gives the analogy about the man, right? If you want to have a child, the man must be potent and the woman must be fertile, otherwise they cannot have a child. प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर संतान चाहिए तो पुरुष को योग्य होना होगा और स्त्री को भी बच्चे उत्पन्न करने के लिए योग्य होना होगा। So when you're not having the child, everyone's figuring out, okay, why is that? Is it you? Is it me? Is it both of us, right? You have to figure it out. Why? Because the results are saying you can't have the child. जब संतान उत्पन्न नहीं होते हैं तो सवाल उठने शुरू होते हैं, या तो पुरुष में कोई गलती है या महिला में कोई गलती है या दोनों में कोई गलती है, क्योंकि जो परिणाम है वो नहीं दिख रहे हैं। So if that's like that materially, it's also like that spiritually. तो अगर ये भौतिक तरीके से इस तरीके से काम करता है तो आध्यात्मिक में भी इसी तरीके से काम करता है। But our problem is that, one of the problems is that because of our pride and our sentimentality, we never think that the problem is us. समस्या ये हमारे कामों में हमारे भौतिकता हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि समस्या हमारी तरफ से है। Because we're just, we're convinced, puffed up, pride, arrogance. We think, no, I know so much, I'm devotee, I'm doing so much, right? We're like, we're promoting ourselves too much, so it can't be us. And then sentimentally, emotionally, we're like, I love Krishna, I love Gurudev, I love the devotees, right? So from our side, we're like, it can't be me. So it must be on the other side. Maybe it's the Guru, maybe it's his devotees, maybe it's Krishna, maybe the process doesn't work because we're fine, we're right. अपने दंगों में अपने मीठे अहंकार में हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं, और लेकिन अवश्य गुरु या प्रक्रिया में कृष्ण में या भक्तों के अंदर कोई गलती है, इसीलिए प्रक्रिया काम नहीं करती। But if we're really being humble and we're really trying to be sincere and serious and we really want to surrender to Krishna and we're convinced of that and it's real, then you will start to realize, no, I really want to surrender to Krishna. And, I'm not acting puffed up, I'm not, it's just not working, so why is it like this? लेकिन अगर आप असल में विनम्र होने का प्रयास कर रहे हैं, गंभीर होने का, एकनिष्ठ होने का, कैसे कृष्ण को सरकार की सेवा करनी है, तो फिर आप ये सोचना शुरू करेंगे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा।
So we have to pray to Krishna to give us intelligence and faith in understanding of what is what. तो हमें कृष्णा से प्रार्थना करने की जरूरत है कि वो हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे ये समझने के लिए कि क्या क्या है। Prabhupada said this is an exacting science. प्रभुपाद कहते हैं ये एक सटीक विज्ञान है And so it's beyond subtle. और ये सूक्ष्म से भी परे है, It's spiritual. ये So आध्यात्मिक to है। understand it and practically realize it, it is not an easy, cheap thing. तो इसको समझ पाना और व्यवहारिक साक्षात्कार करना इतना आसान और सस्ता नहीं है। It requires incredible amount of mercy from Guru Krishna. इसको पाने के लिए अतुलनीय कृपा की जरूरत है गुरु और कृष्ण Guru से। inside, Guru outside, the Shastras, all based on a lot of mercy. गुरु भीतर, गुरु बाहर, शास्त्र ऐसे कुल मिलाकर बहुत सारी कृपा की And जरूरत है। Prabhupada said, who gets that mercy? प्रभुपाद बताते हैं कि किसको ये कृपा प्राप्त होती है। And Prabhupada said, those who convince Krishna of their sincerity and seriousness to want to fully surrender to Krishna. जो कृष्णा को आश्वस्त करते हैं पूर्ण तरीके से कि वो पूर्ण रूप से शरणागत करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, Then they deserve it. तब वो उसके लायक है। Krishna says, if you sincerely want to surrender and serve me in a mood of loving devotion, I'll give you the intelligence how to do it. कृष्ण बताते हैं अगर आप गंभीरता से एक निष्ठा से प्रेम और भक्ति भाव से मुझे शरणागत मेरी सेवा करना चाहते हैं तो मैं आपको बुद्धि दूंगा कैसे आप वो कर So सकते if हैं। we are not getting Krishna's intelligence internally, externally through the Shastra, why is Krishna not giving us that type of intelligence when we're practically realizing everything? It's because there's a problem with us. We're not as sincere and serious as we like to think we are. अगर हमें ये बुद्धि नहीं मिल रही है कृष्णा से भीतर से बाहर से शास्त्र के माध्यम से तो अगर हमें ये बुद्धि नहीं मिल पा रही जिसके माध्यम से हम समझ पाएंगे हमें क्या करना है नहीं करना है इसका मतलब अवश्य हमारी तरफ से कोई गलती So until we get the results and convince Krishna, that means we have to do the work to try to convince him. तो जब तक हमें ये फल नहीं मिलता है कृष्णा की तरफ से इसका मतलब हमें कृष्णा को और आश्वस्त करने की जरूरत है हम कितने You can be convinced, and you can convince your devotee friends and your parents, and you can all be convinced. But if the results are not coming, that means Krishna, Guru Krishna, not convinced. तो आप सोचते हैं आप आश्वस्त हैं आपके मित्र आश्वस्त हैं आपके माता पिता आपके सभी लोग आश्वस्त हैं लेकिन अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहा है इसका मतलब कृष्ण आपसे आश्वस्त नहीं है। That's another thing, right? In the institution, right? Oh, this is my friend. He's so sincere, and he's so advanced and humble. And you're sitting there like, no, don't say that. All right, go on. संसार में क्या होता है कि बात करते हैं कि वो आप कितने गंभीर हैं कितने एकनिष्ठ हैं और कितने ईमानदार हैं फिर वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं फिर वो कहते हैं Don't say like that. No. ऐसा What were you saying? How sincere, how advanced, how pure. कितना एकनिष्ठ कितना गंभीर कितना उम्दा कितना शुद्ध कितना अच्छा है। Start telling them again, and like, no. फिर वो मंदिर से बोला That's so sweet. That's so sweet. This is a child's play. ये बच्चों का खेल हो रहा है This is not for serious people. ये गंभीर लोगों का काम नहीं है। So you want to cheat, we're going to get cheated. तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप ठगे जा सकते हैं। So instead of getting Krupa, and Arisa, you're getting Vanchana. कृपा पाने के बजाय आपको वांछना मिल रही है। And Krishna, He is the witness and the judge. I'm not your witness and your judge. Krishna is in your heart. He's the witness. He's the judge. And He'll give you He'll give all of us exactly what we need and what we deserve, one way or another. कृष्णा हमारे गवाह हैं, कृष्णा हमारे न्याय करता है, हम कितने गंभीर एकनिष्ठ हैं, हम कृष्णा इसका फैसला लेंगे, हम कितने किस चीज के लायक हैं और कितना पाना चाहते हैं। You don't have to try to convince me. मुझे आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है। I'm not your witness. I'm not your judge. मैं आप लोगों का गवाह नहीं, मैं आप लोगों का न्याय करता हूँ। Krishna will tell me कृष्णा मुझे बताएंगे how much I can help you or not. कितना मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या नहीं। So that's your work. ये आप लोगों का काम है। If you're serious. अगर आप गंभीर If you're not serious, nobody can help you. अगर आप गंभीर नहीं हैं, कोई भी आपको साथ नहीं। Even Krishna himself could come and you wouldn't listen to him. यहाँ तक कृष्णा खुद आ जाएंगे तभी आप उसको नहीं सुन पाएंगे। Right? Krishna says, because of your big false ego, your attachment, addiction to bodily platform of life,
therefore you cannot hear me, then you're lost. कृष्ण बताते हैं अपने बड़े मीठे अहंकार की वजह से अपने शारीरिक स्तर की चेतना में आसक्ति की वजह से तुम मुझे सुन नहीं पाते, इसलिए तुम भटके रहोगे, You're lost in the speculation. अपने मनोधर्म में भटके रहोगे। You never get free from speculation. कभी भी मनोधर्म से मुक्त नहीं हो पाओगे। Maybe this, maybe that, हो सकता है, maybe हो सकता है here, वो, हो maybe सकता है there, यहाँ, हो सकता है वहाँ, maybe married, maybe हो not सकता है married, शादी करना, नहीं करना, maybe this house, maybe that हो house. सकता है ये करना या वो करना। It's endless. ये असीमित रूप से चलता There'll है। never be any peace. There'll never be any satisfaction. कभी कोई शांति, कोई संतुष्टि नहीं होगी। It'll never be good enough. कभी भी सही नहीं होगा। So that's why Prabhupada says, until your mind is fixed at the lotus feet of the Lord, your soul will never be satisfied. प्रभुपाद बताते हैं, जब तक आपका मन भगवान के चरण कमल में स्थिर नहीं होगा, कभी भी मन संतुष्ट नहीं होगा। So that's what we have to be convinced about, and that's what we have to convince Krishna of. तो ये हमें आश्वस्त होने की जरूरत है और कृष्ण को इसी बात के लिए आश्वस्त करने की जरूरत है। That's our work, first of all. ये हमारा काम है सबसे पहले। Otherwise, you just sit there saying, oh, is he a guru? Who's a guru? You're a guru. Everybody's a guru. Nobody's a guru. It's like this is nonsensical conversation. वरना केवल बैठ के ये बात करना कि क्या ये है गुरु, वो है गुरु, क्या वो गुरु नहीं है, क्या सभी गुरु है, मैं गुरु, ये सब फालतू बातें हैं। Because without spiritual intelligence, by the mercy of Guru Krishna, we can't know one way or the other. क्योंकि बिना आध्यात्मिक बुद्धि के जो कृष्ण से प्राप्त होती है, हम बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। Maybe some is very obvious, कुछ तो बहुत ही व्यवहारिक होगा, but there may be others that are not so obvious. लेकिन कुछ लोगों को पहचान पाना मुश्किल होगा। So that requires, Prabhupada says, spiritual intelligence and faith from the Lord within the heart. और वो बताते हैं उसको जानने के लिए परमात्मा से बुद्धि और श्रद्धा की जरूरत पड़ेगी। When I met my guru, I prayed to Krishna and Prabhupada, right? Are you manifesting and speaking to that person? And then I just depending on them, and then they convinced me. तो मैं जब अपने गुरु से मिला, मैंने कृष्ण से प्रभुपाद से प्रार्थना की कि वो मुझे बुद्धि दे, श्रद्धा दे। मैं उनके ऊपर निर्भर रहने का प्रयास किया और उन्होंने मुझे आश्वस्त कर दिया। And once Krishna convinces you, then you'll immediately accept it. और एक बार जब आपको कृष्ण ने आश्वस्त कर दिया, तो तुरंत आप उसको There's no स्वीकार mental platform. कोई मानसिक स्तर नहीं रह जाएगा। When Prabhupada met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he walked out and said, that person he's my guru. तब प्रभुपाद श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर से मिले और जब वो बाहर निकले, उन्होंने कहा, वो व्यक्ति मेरा गुरु है। Immediately knew. तुरंत ही वो समझ गया। When my Gurudev met Srila Prabhupada, Prabhupada immediately, the way he was talking to my Gurudev said immediately, this person knows me, knows my heart. Being Paramatma, Krishna in the heart, prompting me, this is your Guru. और जब मेरे गुरु श्री महाराज प्रभुपाद से मिले, जिस तरीके से प्रभुपाद उनसे बात करना शुरू किया, तुरंत श्री महाराज समझ गए कि परमात्मा ने उनको साथ में प्रेरणा मिली कि यही व्यक्ति मेरे गुरु है। So why, if we're not getting that dictation and we're not getting that intelligence and faith, that means we've not convinced Krishna how serious or sincere we really are. अगर हमें ये निर्देश भीतर से नहीं मिल रहा, बुद्धि श्रद्धा नहीं मिल रही, इसका मतलब हमने कृष्णा को आश्वस्त नहीं किया है, हम इतने गंभीर बात के कृष्ण And we'll bring in these coming days, we'll bring all of these quotes and all of these instructions from Prabhupada, that your faith is in Prabhupada. I'm just repeating what I heard and read and spoke, hundreds, thousands of times, but you also will directly hear from Srila Prabhupada's instructions so that you understand what is the foundation of what we're trying to present. और आने वाले दिनों में हम प्रभुपाद के कथनों को सालों शास्त्रों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जो मैंने सालों सालों से सुना है, सालों सालों से लोगों के सामने दोहराया है, और आप खुद भी उन कथनों को स्वयं से देखिए और प्रभुपाद के कथनों। And then if you read my Gurudev's books and teachings and you see his lectures and his tapes, you see how much is this person representing the mood, the instructions, and the teachings of his spiritual master. और आप मेरे गुरुदेव श्री गौरव महाराज के प्रवचन, उनकी किताबों और उनकी शिक्षाओं को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कितना ज्यादा वो अपने आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद के भाव को, उनके निर्देशों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। You can also say, और वहाँ पे भी आप देख पाएंगे। is he presenting as it is? क्या वो यथारूप में प्रस्तुत कर रहे हैं? Is he deviating, adding, subtracting anything from the message of his spiritual master? क्या वो कहीं पे भी भटक रहे हैं, क्या कुछ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, मूल संदेश जो उनको उनके गुरु से प्राप्त हुआ? That's the proof. ये है प्रमाण।
Okay, so I think that's good for tonight. मुझे लगता है आज के लिए Thank you very much for your kind attention. I hope that helped you. Every day, a little better, 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 हर दिन better. थोड़ा और बेहतर और बेहतर Pray to Krishna, just be patient. Everything step by step can be reasonably discussed and answered, and doubts can be pacified, and you can get some confidence and faith and strength, and that will come day after day. कृष्णा से प्रार्थना आप करते रहिए और धीरे धीरे हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, संदेहों को नष्ट करने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे करके समस्या नष्ट होगी और श्रद्धा बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा। ये मेरी श्रद्धा है, मेरा अनुभव है। And if it's not like that, I don't want to do this service. और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मैं ये सेवा नहीं करना I'm चाहता। not here to waste my time or your time. मैं यहाँ अपना समय या आपका समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। Oh, they think I'm their guru. Oh, you know, that's nice. I'm a guru and I have followers. तो उनको लगता है कि मैं उनका गुरु हूँ, ये बहुत अच्छा है, मैं उनका गुरु हूँ, ये मेरे शिष्य हैं। That's not why I'm here. इसके लिए मैं यहाँ हूँ। And if you want hundreds, thousands of disciples, who will preach like this if you want tens of thousands of disciples? अगर आपको हजारों सैकड़ों शिष्य जमा करने हैं, कि कौन इस तरीके का प्रचार करेगा? अगर आपको हजारों सैकड़ों शिष्य So don't expect, you know, big masses of people. तो आप अपेक्षा मत कीजिए कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं। Everyone's interested in the truth till you give them the truth. तो सभी को सत्य में दिलचस्पी होती है जब तक उनको सत्य दिया नहीं जाता। Then they're like, okay, you know, this is a little heavy, this is a little complicated. तो ये थोड़ा ज़्यादा भारी है, कुछ ज़्यादा जटिल है, कुछ ज़्यादा ही मांग की जा रही है। Then it's like, oh, okay, I'd rather go for the gradual process, you know. कहता हूँ मैं थोड़ी धीरे-धीरे वाली प्रक्रिया से उसको। Then we get cheated. तब हम ठगे जाएंगे। So this is a test. ये है परीक्षा। My Guru Dev used to say, what kind of guru do you want? What kind of guru do you receive? Someone sent by Krishna or someone sent by Maya? मेरे मुझे कहा करने थे किस तरह के गुरु आप चाहते हैं? माया के द्वारा भेजा हुआ गुरु या कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ? And otherwise we're acting as our own guru. इसके अलावा वरना खुद के गुरु के रूप में कार्य So करते how well is that working? हैं। वो कितना अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। So all these things have to be considered and we have to understand all of it. सारी चीजों पे विचार करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। So let's help each other to understand all of तो it. चलिए हम सभी एक दूसरे की मदद करते हैं इन बातों को समझ पाने के लिए। All right, everyone. Thank you very much. Shri Shri Gurnitai ki Jai. Prabhupada ki Jai.